हे हाय। मैं हूं अक्षय कुरेकर, अ ब्लॉकचेन डेवलपर एंड यूट्यूबर। सो आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। ये पूरी एक प्लेलिस्ट का फर्स्ट वीडियो है। इस प्लेलिस्ट में क्या सीखेंगे हम? दिस इज द हैंड्स ऑन प्लेलिस्ट फॉर क्रिएटिंग अ कंप्लीट Hyperledger Fabric project, including network setup, prerequisites, writing chain codes, order services, consensus mechanism, transaction lifecycle, how to write chain code and deployment of chain codes, building Node SDKs, APIs, connecting those APIs with respect to client, creating client like React.js project or Next.js, right? So ये पूरा हम समझेंगे और हमारा जो प्लॉट होगा, यूज केस होगा मैनेजिंग इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स। तो इसमें हमारे मल्टीपल एक्टर्स रहेंगे, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, पेशेंट्स, इंश्योरेंस कंपनीज, researchers, pharmaceutical companies, and so on and so forth. So I'm super excited to build this project. So let's get started to build this project. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग our channel and sharing with your friends and community. Thank you so much. See you there. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हम यूज केस समझेंगे, ओवरऑल यूज केस कैसा है, एंड देन विल गो इन डीपर नेटवर्क सेटअप, प्रीरिक्विजिट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि यूज केस समझना हम करने क्या वाले हैं। ओके, सो देखो हमारे पास में मल्टीपल एक्टर्स हैं। जैसे हमने पहले बताया, वी आर गोइंग टू डील विद द इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड यूजिंग ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम। सो सबसे पहले हमारा नेटवर्क कंपोनेंट रहेगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे एक्टर्स है, मेरा मेन एक्टर्स होगा पेशेंट। वो पेशेंट क्या कर सकता है, यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, जैसे गेट ऑल द प्रिस्क्रिप्शन, जो भी उसको प्रिस्क्रिप्शन मिलेंगे वो प्रिस्क्रिप्शन चेक करना, अपनी पूरी ट्रीटमेंट का हिस्ट्री ट्रैक करना, राइट? अगर उसके पास में इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस क्लेम करना, एंड देन गेटिंग दैट इंश्योरेंस फ्रॉम अप्रूवल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे, जैसे हम ब्लॉकचेन है तो यहाँ पे हम एक थोड़ा टोकोनॉमिक्स का मॉडल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। विल यूज हियर रिवॉर्ड्स मैकेनिज्म। जैसे पेशेंट्स, अगर हमारा मान के चलो उसके पास में कुछ उस पेशेंट को सेंसिटिव डिसीज है और उसको कुछ अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कौन सी डिसीज है, वो किस टाइप का डाइट फॉलो करता है, एंड देन उसका एक्सरेज, ऑल दोज प्रिस्क्रिप्शंस, जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसके पूरे ट्रीटमेंट का डेटा अगर उनको मोनेटाइज करना है, हमें उसको रिसर्चर्स को बेचना है। जैसे हमारे इसमें रिसर्चर्स भी है, राइट? जो रिसर्च करेंगे, हमारे डेटा साइंटिस्ट होंगे, उनको बेचना है, राइट? टू डू द प्रॉपर एनालिसिस ऑन द डेटा, जो भी हमारे न्यू न्यू डिसीजेस होते हैं, तो उसको उसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे। वो रिवॉर्ड्स हो सकते हैं कि उनको डिस्काउंट मिले किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में व्हेन दे आर बाइंग द मेडिसिन, या फिर डॉक्टर के कंसल्टेंट फीस में डिस्काउंट मिले। सो एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, बट अभी के लिए हम तो एक सिंपल टोकन्स जनरेट करेंगे एंड देन विल सी कि रियल यूज केस में उसको कैसे यूज कर सकते हैं। सो दिस इज लाइक अ पेशेंट थिंग। डॉक्टर, अभी डॉक्टर ऑफ कोर्स डॉक्टर कैन क्रिएट अ पेशेंट रिकॉर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट। तो इसका भी ये भी राइट रीड एंड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। सो ही कैन अपडेट दी पेशेंट रिकॉर्ड, जैसे जो भी उसने फर्स्ट टाइम आया उसने विजिट किया, व्हाट इज द प्रोग्रेस, देन सेकंड टाइम उसका क्या प्रोग्रेस है, वट एवर द प्रिस्क्रिप्शंस डॉक्टर इज गोइंग टू गिव टू दैट पर्टिकुलर पेशेंट, वो भी हम वहाँ पे अपडेट करेंगे। डॉक्टर कैन अपडेट ऑल दोज थिंग्स। डॉक्टर कैन फेच कि मैंने कितने पेशेंट्स अभी तक ट्रीट किया और उनकी पूरी क्या हिस्ट्री है, वो सारी चीज यहाँ पे दिखेगी। एंड देन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मेन चीज रहेंगे। हॉस्पिटल अभी देखो, ओके, बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, हमारे पास में टोटल्स हॉस्पिटल, डॉक्टर, पेशेंट, डायग्नोस्टिक्स सेंटर या लैब्स, या फार्मा सेंटर्स, इंश्योरेंस और रिसर्चर्स, ये मैंने मेन एक्टर्स डिनोट किए यहाँ पे। तो इनको ऑनबोर्ड कैसे करेंगे नेटवर्क में? सबसे पहले तो हम एडमिन बनाएंगे, नेटवर्क एडमिन। नेटवर्क एडमिन एक आइडेंटिटी रहेंगे जो इन सबको ऑनबोर्ड करेगा सबसे पहले, राइट? और यहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट है। तो ओके, अगर आप ये हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट फॉलो कर रहे हो तो मैं इतना अज्यूम कर सकता हूँ कि आपको एटलीस्ट हाइपरलेजर फैब्रिक का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो कैसे काम करता है, ठीक है? तो वो अजम्पशन के बेसिस पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर नहीं होगा तो फॉर श्योर हम आगे भी जब उसको मैं बनाऊंगा, हम जब हैंड्स ऑन करेंगे तो वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। बट एज ऑफ नाउ जब हम यूज केस एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आई विल अज्यूम कि आपको उतना तो पता होगा कि हाउ हाइपरलेजर वर्क्स। सो इट्स लाइक अ परमिशन्ड नेटवर्क होता है ये। तो यहाँ पे हम जितने भी एक्टर्स होते हैं मैनेज्ड होते हैं बाय नेटवर्क। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट होता है। सो these are segregated. Let's say these three people are part of one organization, these three people are part of another organization, ठीक है? सो हॉस्पिटल डॉक्टर्स को ऑनबोर्ड कर सकता है,
इसको हॉस्पिटल को कौन ऑनबोर्ड कर रहा है? नेटवर्क ऑनबोर्ड कर रहा है हॉस्पिटल को, हॉस्पिटल ऑनबोर्ड कर रहा है डॉक्टर्स को, क्योंकि ऑफ कोर्स डॉक्टर इंडिविजुअल सर्विस कभी नहीं देता है, वो किसी क्लिनिक या सेंटर का, सॉरी हॉस्पिटल का हमेशा पार्ट होता है, देन ओनली ही कैन एबल टू सर्व हिज doctor purpose. Okay, so he can create and manage hospital, get all the doctors from my hospital, get all the patients in my hospital. So ये सारी चीजें एक साथ लिंक है, ये वाली तीन चीज. Okay, then we have diagnostic centers जिसमें patients x-ray and sonography and all those other जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट वाली पार्ट होता है वो यहाँ पे हम परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, और अभी लैब का क्या रोल है यहाँ पे? लैब पर्टिकुलर पेशेंट का डेटा अपलोड कर सकता है नेटवर्क पे, जो भी एक्सरेज हो गया, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट जनरेट हो गए, दे कैन अपलोड इट ओवर देयर. फार्मास्यूटिकल, अभी फार्मा और डॉक्टर का डायरेक्ट रिलेशन है यहाँ पे हॉस्पिटल का. जैसे फार्मास्यूटिकल्स को पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन डायरेक्टली मिल सकती है यहाँ पे. सो जैसे पेशेंट जाता है या पेशेंट नहीं भी गया तो फार्मा कैन सिंपली डिलीवर दी medicine to the patient based on the data provided by the hospital or doctor based on their patient ID. So they can also read and write the data. और यहाँ पे मैंने और एक पार्ट यहाँ पे ऐड किया, जैसे बहुत सारे कोविड जैसे सिचुएशन में हमें मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्पेसिफिक सेट ऑफ मेडिसिन का स्टॉक विथ रिस्पेक्ट टू ईच फार्मा या मेडिसिन अवेलेबल है या नहीं है, कौन से रीजन में अवेलेबल है, कौन से रीजन में अवेलेबल नहीं है. तो वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे एक अपडेट कर सकते हैं की मेडिकल स्टॉक और की मेडिकल स्टैक ऑन द ब्लॉकचेन फॉर सिंप्लिसिटी. ये भी एक फार्मा का मेन की रोल रहेगा यहाँ पे. Now let's go to the insurance company. Insurance companies are those companies which issues the insurance through the patients, and जब कोई पेशेंट अपना इंश्योरेंस क्लेम करता है तो दे कैन सिंपली वेरीफाई कि ये जो पेशेंट ने क्लेम किया ये लिटरली वैलिड डेटा है या नहीं है. सो जो भी वो क्लेम करता है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम एक्स वाई जी डिसीज, तो वो सिंपली फ्रॉम द लेजर क्रॉस वेरीफाई कर सकता है कि ये पेशेंट को सच में उस तरीके की कोई भी जो उसने क्लेम किया वो डिसीज है या नहीं है, एंड देन ही कैन सिंपली अप्रूव द क्लेम. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल दिस, क्योंकि इसमें हम पूरा एक जो बहुत बड़ा स्कैम या फ्रॉड होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, मतलब इसको अवॉइड कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथोडोलॉजी. And then most important actor in our ecosystem is researchers or data scientists, जो कि काम रहेगा कि collecting data from different patients or hospital altogether, collecting different data on our network. It could be a pharmaceutical data, it could be a lab data, it could be a patient data, it could be disease data. जो भी डेटा है वो कलेक्ट करेंगे, या भी एक गवर्नमेंट लेवल पे भी हो सकता है, ग्लोबल लेवल पे भी हो सकता है, या मिनिस्ट्री लेवल पे भी हो सकता है रिसर्च का काम. सो ये सारी चीज डेटा कलेक्ट करना, एंड देन गवर्नमेंट इज गोइंग टू incentivize the all those patients or hospitals or so and so actors who are going to help them in their research in terms of rewards or discounts and so on so forth stuff. तो यहाँ पे सिंपली रहेगा कि कलेक्टिंग डेटा एंड प्रोसेसिंग दैट डेटा. सिंपल. ओके, सो इतना सिंपल सा हमारा यूज केस है. अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे कि नेटवर्क कैसे बनता है यूजिंग दीज एक्टर्स, एंड देन नेटवर्क के अंदर और कंसेंसस मैकेनिज्म कैसे होता है ऑफ ऑल दिस ऑर्गेनाइजेशन. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. सो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स और उसको कैसे सेटअप करना है ऑन ऑल द सिस्टम लाइक विंडोज. मैं मेरे विंडोज सिस्टम के साथ में फॉलो कर रहा हूँ, तो जो भी डेवलपर्स विंडोज सिस्टम यूज कर रहे हैं, गुड, यू कैन फॉलो अलॉन्ग विथ मी. बट सेम टाइम मैं उबंटू और मैक के लिए भी कमांड्स हेल्प करते जाऊंगा ऑन द फ्लो. आई कीप पोस्टिंग कि मैक के लिए कौन से कमांड फॉलो करने हैं, उबंटू के लिए कौन से फॉलो करने हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ. और हाँ, मैंने एक प्रॉपर पीपीटी स्लाइड्स बनाई है, गूगल स्लाइड्स है. ओके, सो यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो आप उसको एंड दोस पीपीटी आई कीप अपडेटिंग व्हेनेवर आई एम अपडेटिंग एनीथिंग इन द वीडियोस. सो ये सेम पीपीटी हम पूरे प्लेलिस्ट के लिए फॉलो करेंगे from use case point of view, tools, and then again the commands to deploy our chain code and other things, right? तो सारी चीजें उस पीपीटी में रहेंगी. So it will be helpful to follow along that PPT. So you will get all the commands at one place. So let's get started with today's video. Okay, so yeah, this is just an introduction about me, Akshay Kurhekar, a blockchain developer. So Hyperledger Fabric hands-on project with Akshay Kurhekar, yeah. हाँ, so पिछली वीडियो में हमने ये यूज केस समझ लिया था, द फ्लो डायग्राम, व्हाट आर द डिफरेंट एक्टर्स वी हैव. अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके चेक कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन to know the use case. Now let's start with the tool installation. Okay,
सो हमें कौन कौन से टूल्स की हेल्प लगेगी? सबसे पहले हमें WSL लगेगा। तो यहाँ पे वेरी सिंपल फंडा है, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तभी आपको WSL की जरूरत पड़ेगी। अगर आप विंडोज नहीं यूज कर रहे हैं या आप मैक या फिर उबंटू यूज कर रहे हैं तो इट्स गुड, आप डायरेक्टली सारे स्टेप्स उबंटू पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, दिस WSL पार्ट इज ओनली फॉर विंडोज फोक्स हु आर यूजिंग विंडोज सिस्टम। नाउ सेकंड, दूसरी चीज हमें लगेंगे डॉकर कंपोज, सॉरी, डॉकर डेस्कटॉप। नाउ हियर वी कैन यूज डॉकर डेस्कटॉप एज वेल और योर डॉकर एसडीके जो CLI के तौर पे हमारे टर्मिनल पे आता है, राइट? सो यू कैन यूज आइदर, तो बट आई वुड रिकमेंड कि डॉकर डेस्कटॉप यूज करो विच इज इजी टू यूज एंड जिसमें आप लॉग्स एंड हर एक चीज इजीली देख सकते हैं। यू डोंट नीड टू रिमेंबर मल्टीपल डॉकर कमांड्स फॉर दैट, राइट? सो डॉकर के साथ में हमें डॉकर डेस्क कंपोज भी आ जाता है, बट इफ यू आर installing with CLI, so you have to explicitly install the Docker Compose separately. उसका सर्वर इंजन अलग से आता है। ओके, now Node.js simple. If you are a developer, I hope you most of you are familiar with the Node.js. तो हमें Node.js लगेगा, npm और yarn. I would prefer npm for this playlist. And then git and github, क्योंकि मैं हमारा पूरा कोड हम github पे भी मेंटेन करेंगे, right? So we need git and github for our playlist. Golang ऑप्शनल है, so not to worry much. React.js and Next.js, ये तो हमारा मैंने, इट्स नॉट लाइक अ टूल बट दिस इज, अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग है इन टर्म्स ऑफ प्रीरिक्विजिट्स की, यू आर फेमिलियर विद React.js का कोड कैसे होता है, उसका सिंटैक्स सिमेंटिक्स कैसे होता है, व्हाट्स द फोल्डर स्ट्रक्चर, हाउ टू राइट द सिंपल वेब एप्लीकेशन यूजिंग React.js and Next.js, so it will be helpful. तो हम जब हमारा क्लाइंट डिजाइन करेंगे at the end of projects, so you won't find any difficulties, it will be easy for you to understand all those things. And yeah, of course, most important, हमें लगेगा Postman to trigger our Node.js APIs जो हम लिखने वाले हैं Node.js के अंदर, right? And then the most important piece, it's like Fabric binaries and SDKs हमें डाउनलोड करने पड़ेंगे. So once we are done with our all this stack, we will download these Fabric binaries. So let's see. आज की वीडियो में हम टारगेट करेंगे WSL, Docker Desktop, Node.js, npm, Git, GitHub and Postman part. Okay, so let's get started. सो सिंपल है, अगर आपको सबसे पहले WSL डाउनलोड करना है, आपने अभी तक नहीं किया है, तो लेट्स गो टू विंडोज. सो विंडोज में जाएंगे हम यहाँ पे टाइप करेंगे PowerShell. We need to go to PowerShell, run as administrator. Okay, yes, allow yes, and then यहाँ पे हमें कौन सा कमांड टाइप करना है? सिंपल WSL hyphen hyphen install. Okay, so you have to use this command to install the WSL. जैसे आप हिट करेंगे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा. I already have, so I won't be running this command, but please run this command. So आपका इंस्टॉल चालू हो जाएगा WSL. तो once we are done with that, okay, तो simple what you can do, you can check WSL. यहाँ पे आपको ऐसा WSL अगर दिख रहा है, right, so you can open it, मतलब आपका WSL इंस्टॉल हो चुका है. Once you are done with the installation part, वो हाँ, and यहाँ पे most important thing, it will ask you to create a profile. जैसे वो पूछेगा कि enter username, enter password, तो please enter कीजिए, तो जिससे आपका एक separate profile बनेगा WSL के लिए. Okay, so I already opened WSL, but for some reason it's taking time. Yeah, it's initiated. So जैसे आपका WSL इनिशिएट हो जाता है तो आपको दिखेगा कि जो भी आपने यूजर नेम एंटर किया है विद रिस्पेक्ट टू दैट विद योर लैपटॉप नेम, यहाँ पे वो एंटर हो जाएगा. नाउ ये हमारी उबंटू सिस्टम है. यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम टू उबंटू 24.041 LST. तो ये मेरा उबंटू है, लेटेस्ट उबंटू मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है. तो अभी आपको यहाँ पे अगर ऐसा विंडोज नहीं आ रहा होगा या आपका बहुत बार ओपन होके क्लोज हो जाएगा इमीडिएटली, राइट? तो उस केस में क्या करना है हमें? हमें सबसे पहले ये फाइंड करना है. तो देखो मैंने यहाँ पे स्टेप्स मेंशन किए. यू नीड टू इनेबल योर वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म. वो कैसे करेंगे? टर्न विंडोज फीचर ऑन और ऑफ, ये वाली चीज हमें सर्च करनी है हमारे स्टार्ट मेन्यू में. ओके, टर्न विंडोज, ये वाली चीज. ओके, टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ. तो ये कंट्रोल पैनल में जाके व्हाट वी नीड टू चेक, वी हैव टू स्लोली स्क्रॉल डाउन एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म. इसको इनेबल करना है, इसको क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू गो लिटिल डाउन, फर्दर डाउन. यू कैन सी हियर विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स. ओके, तो ये दो चीजें हमें क्या करना है? इनेबल करना है. Windows subscription for Linux. Okay, if you are done with that, okay, and restart your system if you are facing some issues. In now we are good, we are done with that.
और एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन मोर थिंग वी नीड टू डू, वी नीड टू गो टू द माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, एंड देन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना उबंटू डाउनलोड करना है। ओके, WSL के बाद में आपको उबंटू डाउनलोड करना है यहाँ से, एंड यू कैन चूज LST एनीवन हियर, और 20.04.6, or you can download Ubuntu 24.04. It's up to you. Anything is fine for our use case. Now let's see. So once we are done with this, okay, जैसे आपका ये WSL वाला part sort हो जाता है, then simply let's go open here our WSL which we closed earlier. तो अभी हमें क्या करना है, हमें इंस्टॉलेशन टूल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे हमारे उबंटू सिस्टम के अंदर ना। WSL इज लाइक माय फ्रेश उबंटू इंस्टेंस। ओके, तो इसके अंदर हमें नोड इंस्टॉल करना पड़ेगा, npm चेक करना पड़ेगा कि अच्छे से इंस्टॉल हुआ नहीं है, एंड देन वी हैव टू चेक विद आवर गिट। सो सबसे पहले हम चेक करेंगे नोड -v, राइट। सो मेरे पास में नोड -v, इट्स शोइंग मी डिफॉल्ट वन, राइट। अगर आपने नोड इंस्टॉल नहीं किया है, सो यू कैन फॉलो दिस कमांड इन PPT, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ओके, बिफोर दैट, so my bad, here are the steps to download the node. Okay, so these are the complete steps to download node and check if you have successfully installed the Node.js or not. Okay, now it's time to follow for Docker desktop. So यहाँ पे मैंने PPT में link दिया है, so you have to simply go to this link. So it's like the link is to download the Docker desktop. This is a Docker desktop app, right? So आप simply जाइए नीचे, so you have to scroll further and download Docker desktop, and you have to choose your selective proper one. अगर आप Windows पे है तो you can choose this one, download for Windows. अगर आप Mac use कर रहे हैं with respect to your chip, you can download, and for Linux this is simple, download for Linux. So simply it's like a normal, very very normal command. आपकी exe file download हो जाएंगी, simply have to go and do accept and simply install. So once you are done with that, you can see Docker desktop, आप इसको open कर सकते हैं. So it will take few minutes. Once we are done with Docker desktop, I hope you have the GitHub profile properly, and you can set up once you are done with node and npm fnv. Sometime, yeah, it's behaves little slow, but that's fine. So yeah, you can see I have here Docker. So this is very important to set up Docker, because हम images download करने वाले हैं, हमारे सारे जितने भी Fabric binaries है. So you can see I have already downloaded few. So right, I have my project set up. So this type of images we're gonna download. Don't worry if you can't see this, because we have not did anything properly. But this is important कि आप यहाँ पे अच्छे से आपका Docker desktop open हो रहा है, and you can see the container properly. Nothing will be running here because अभी हम कुछ नहीं रन कर सकते हैं, and you can create your profile on Docker Hub as well. So you can simply go and sign in and create your project. So जो भी आप यहाँ पे operations perform करेंगे, आप अपने Docker पर उसकी images store करके रख सकते हैं. That's for that. But अगर नहीं कर रहे तो it's completely optional, not necessary. Now we are done with Docker desktop. We are done with Node.js, right? Now let's see few commands to check if it's working fine or not. Docker is get connected with your WSL or not. क्योंकि यहाँ पे एक बात समझिए, जो विंडोज के लिए फॉलो कर रहे हैं, दोज पीपल आर फॉलोइंग द कमांड्स फॉर विंडोज, हमने जो हमारा बेस सिस्टम है उसके अंदर डॉकर डेस्कटॉप को डाउनलोड किया है, विच इज विंडोज, एंड जो हमारा WSL है, विच इज दी अनदर स्मॉल उबंटू इंस्टेंस, अभी उसके अंदर हम ट्राई कर रहे हैं कि वी गोना यूज द डॉकर, ठीक है। बट आइडियली ये डिफॉल्ट सेटिंग रहती है, अगर आप अपने बेस सिस्टम में डाउनलोड करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हमारे उबंटू WSL सिस्टम में भी वो एक्सेसिबल रहता है। ओके, टू चेक दैट सिंपली यू कैन टाइप अ डॉकर कमांड, docker -v. Okay, yeah, it's showing me, or you can see docker ps. This is a command to list the all containers, so it should show something like this: doc container id, images. सो सिंपल सा फंडा है, अगर आप ये दो कमांड रन कर रहे हो और आपको कोई एरर नहीं आ रहा है तो मीन्स ऑल सॉर्टेड। ओके, हाँ, यहाँ पे एरर आ सकता है कौन से केस में, अगर आपका ये डॉकर बंद है तो पहले आपको इसको डॉकर को ओपन करना पड़ेगा,
ठीक है, एंड देन यू हैव टू ट्राई दिस कमांड, तभी जाके ये कमांड चलेगा, नहीं तो मे बी नहीं चल सकता है, इवन दो इन योर पॉजिटिव केस। ओके, सो या वी आर प्रीटी गुड विद दिस। सो आप सारे कमांड्स ट्राई कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक कमांड्स आई हैव लिस्टेड आउट फॉर चेकिंग डॉकर images and docker ps for listing all the running containers, docker ps -a for listing all the containers within stopped state or running state. Okay, for Node.js installation, we can follow this official site जो हमारा official documentation में provide करता है. You can download it from using Node.js installer, या फिर you can, this is like manual process. Simply you have to go to the website, download it explicitly, and just click next, 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 finish. Right? Here you can download it for, this will be helpful for Ubuntu system. तो Ubuntu system में आप using CLI command भी Node.js को download कर सकते हैं. So this is like we will download NVM Node Version Manager, और Node Version Manager से हम latest Node को use करेंगे. Okay, so this is how you used to do. Simply clone the bash file, simply source it, and then use the nvm install lst. तो ये latest version of Node.js will install करेगा ये, and then simply have to check कि Node version मेरा सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है. Okay, so you can follow this practice to download Node.js. Now we can see कि हमारे पास में git install है कि नहीं है. So simple, you have to type git -v. So if it's showing version something, if your command is not filling, हमारा command run हो रहा है, मतलब हमारा git अच्छे से install हो चुका है, right? So let's see how many things we have done. हमारा WSL पार्ट डन है, डॉकर डेस्कटॉप पार्ट डन है, डॉकर कंपोज उसमें इंक्लूडेड है, Node.js डन है, npm डन है, गिट डन है. गिटहब पे आपको गिटहब के वेबसाइट पे जाके अपना प्रोफाइल क्रिएट करना, अगर अगर अभी तक आपका प्रोफाइल क्रिएटेड नहीं है तो. इफ यू हैव ऑलरेडी, गुड. गोलैंड ऑप्शनल है, इसको अभी हम स्किप करेंगे. रिएक्ट जेएस को हम एंड में आएंगे रिएक्ट जेएस के ऊपर, बिकॉज कंप्लीट इसका प्रोजेक्ट सेटअप करने वाले हैं. सो विल टेक इट अप लेटर, एंड विल कम टू पोस्टमैन वंस वी आर डन विद आवर रेस्ट एपीआईज. ओके, तो जब जाके हम इंस्टॉल करेंगे उसको, अगर आपके पास में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो गुड, वेल एंड गुड, नॉट टू वरी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस फैब्रिक बाइनरीज, तो इसके स्पेसिफिक स्टेप्स, हमें डिटेल स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सो सी यू देयर इन नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. तो हमने दो वीडियोस में ऑलरेडी देख लिया है कि हमारा ओवरऑल यूज केस कैसे होने वाला है, व्हाट आर द डिफरेंट प्लेयर्स एंड डिफरेंट एक्टर्स इन आवर कंप्लीट यूज केस, एंड वी हैव सीन द प्रीरिक्विजिट्स ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ सर्टेन टूल्स, राइट? सो इन दिस वीडियो, आज की वीडियो में हम इंस्टॉल करेंगे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दी हाइपरलेजर फैब्रिक डिपेंडेंसीज. बहुत ही ट्रिकी पार्ट होता है थोड़ा बहुत. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. बट हाँ, स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, शेयर विद योर कम्युनिटीज, एंड लेट्स ग्रो टुगेदर. थैंक यू सो मच. लेट्स गेट स्टार्टेड. Hey, hi. So now let's get started with respect to downloading the Hyperledger Fabric binaries. So binaries download करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? The prerequisites, you must need to have this sudo apt install jq. jq is required. So to download jq, we just need to do sudo apt install jq-y. ये आप करना. मेरे इसमें ये ऑलरेडी डाउनलोड है, so I won't follow this command. And after that, second step is हमें ये रिपोजिटरी क्लोन करनी पड़ेगी. अभी एक मेरी पब्लिक गिटहब पे मैंने रिपोजिटरी बना के रखी है, जिसके अंदर हमारी एक स्क्रिप्ट है जिससे हम हमारे फैब्रिक बाइनरीज को डाउनलोड करेंगे. ठीक है, सो यू कैन क्लोन दिस रिपोजिटरी यूजिंग दिस कमांड. फिर उसके बाद में थर्ड स्टेप हम क्या करेंगे, विल सिंपली रिडायरेक्ट टू दी, चेंज द डायरेक्टरी टू दी दिस प्रोजेक्ट एंड write the command to just we have to hit this install fabric.sh file to download our binaries. तो अगर आप विंडोज यूज कर रहे होंगे तो यू हैव टू यूज द WSL. तो मैंने WSL में हमारा लॉगिन किया है, सो यू कैन सी हियर WSL ls. तो यहाँ पे मेरे और भी दूसरे बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, राइट? सो हियर व्हाट यू नीड टू डू, फर्स्ट यू हैव टू डू git clone that repository name. Okay, you have to copy this, and इस ppt का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. दिस इज माय गूगल ड्राइव्स ppt, गूगल स्लाइड, so you can access it. Feel free to use this ppt. You just need to copy this command and paste it over here. So for me, I have already cloned this repository क्योंकि मैंने यही से create करके वहाँ पे push किया, right? So simply what I need to do, simply just change your directory to this folder.
So I have just changed it ls, right? So now I can see, so yeah, I have already tested this. So once I tested the scripts, I got these fabric samples created. But don't worry, for you guys, what I can do, I can create remove minus rf. So what I did, I just removed the fabric samples repository, and now we need to do this install. We need to hit this particular file. In this file, what is written in this file? So let me show you that as well. So this is my, I opened this in the already Node.js. Sorry, my bad. It's in VS Code. So where you can see the script. This script is responsible for downloading all the binaries and images required for our Hyperledger Fabric setup. Okay, so it's gonna pull all the required images. Cool. So let's just hit this file. So it will take few minutes to download, but make sure that before hitting this file, you have to switch on your Docker desktop. So here I am using Docker desktop, so I have on this Docker desktop, right? So, and if you are using the Ubuntu or Mac, if you have your system Docker like CLI based Docker, so using CLI, just open your Docker and then only hit it. Or otherwise, you will get error. You'll get error. You cannot able to pull these images. Okay, cool. So I got this. If you getting some errors, Docker is not found or Docker command is not available, something like that. So just check your Docker is up or not. Okay. And now we have successfully downloaded it. And if you do ls again, so I can see fabric samples is downloaded here, it's set up. So if I go to this VS Code, so what is a method to open VS Code? Simply you have to write your code dot, and then it will download few dependencies and it will open up in your VS Code. If you are using VS Code, then it will work for you. If you are not using VS Code, then you have to open it explicitly for in any editor which you use or prefer. Cool. Now let's do clear here. So what we can do here, so you can check here is a fabric samples. Let me increase my font little bit. Yeah. So here fabric samples. So inside this, there is lot of projects. You can see there is asset transfer, auction sample, builders, config, CI, full stack transfer guide. There are a lot of multiple things, but we will go step by step. Not to worry, we'll check one by one flow. So there are multiple samples they have given how to set up this type of, how to set up token ERC20 in Hyperledger Fabric 721, 112, 1155, and UTXO, all those kind of projects. But we'll go step by step. As I mentioned, very first we'll understand the network, and then on top of that we'll understand the application, like how to write the chain code and how to use that chain code and so on and so forth stuff. So first let's start it with respect to test network. So now our target is to run the network. So network here are in Hyperledger Fabric there are multiple stuffs. There is a concept called organization, there is a concept called peer, there is a concept called orderer, right? So orderer is something which is responsible for doing the consensus mechanism. And now in this 2.5 we have a capability to use BFT consensus mechanism or raft consensus mechanism. So by default it's gonna use the raft consensus mechanism over here. Okay. So if you want to know more about the raft and BFT, let me know, I'll create a detailed video about that. But more or less they are leader and follower based consensus mechanism. There are one leader who will go is to always convey the messages whenever new transaction hit or whenever new any activities happen in their network. So they will going to say, hey, this is a transaction, and then followers will check that transaction and they'll commit it. So once the more number of commit got from the all the followers, then that leader will mark that transaction as a successfully committed in the ledger. So that's how the consensus happens in raft. uh, Now yeah, so let's go inside our fabric samples. Let's go inside fabric samples. Inside fabric samples there is a test network. Let's go into the test network.
Now, let's try to run our network. So to run network, I can see there is a one network.sh file. Okay, there is one network.sh file. So inside this file, we have a multiple commands to. They have command to set up a test network with two organization and three orderers. Okay. So now let's get started to run this network file. So how to run that network file? Pretty simple. Dot forward slash network dot sh and then up command space up, hit it. So make sure that your docker is up. अगर आपका डॉकर अप नहीं होगा तो दिस विल नॉट रन, बिकॉज ये डॉकराइज कंसेप्ट है. ये डॉकर में आपके कंटेनर्स बनेंगे. आपका पीयर का कंटेनर बन गया है, ऑर्डर का कंटेनर बन गया है, एंड अगेन आई कैन सी द पीयर ऑफ ऑर्ग वन. सो यस, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑर्डर का कंटेनर बना हमारा. ओके, एक पीयर का peer of org1 and peer of org2, peer 0 of org1 and peer 0 of org2. So इसको अच्छे से देखने के लिए हम what we'll do, we'll go towards our docker. Let's switch to the docker. And yeah, in container section, if you click on the container, you can see three container are running. Or if you are seeing only compose, just open the compose. You can see three containers over here: peer 0, peer 0 org1, peer 0 org2, and orderer. Okay, so if you can go inside this, you can see what is happening, the logs. So आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी fancy चीजें हो रही है, because this is all about the networking. So they will connect with each other, they will create a channel and they'll join with that channel, and so on and so forth. So यहाँ पे काफी continuously system chain code level एक अलग चीज होती है. So in upcoming videos, I'll explain what is system level chain code and what is normal application level chain code as well. Okay. So this is the log of this particular container. Now, if you go back, let's check the log of orderer. So you can see they are setting up their TLS certificates, and this is very much important concept. The TLL certs, and they are mostly primary keys and private key, which we'll use to manage their access level and all those things. So this is all about the orderer. So if you are done with these steps, so yeah, congratulations, man. You are set up our network properly. To check, we can do docker ps. We have checked from docker desktop as well, but to check from CLI, from command, simply we can do docker ps to check the containers. And now we need to stop this container as well, right? Because if you won't stop it properly, it went into the unexpected mode, or in a very bad condition, then you will struggle a lot to set up it again. हाँ, वापस सेटअप करने में हमें इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगे. सो व्हाट वी नीड टू डू, सिंपल कमांड network dot sh down and down. Just we need to make it down. And ये क्या करेगा, ये इसको स्टॉप करेगा, एंड देन दे विल रिमूव द वॉल्यूम्स एज वेल. ठीक है. सो इसमें दो कमांड होते हैं. एक नेटवर्क स्टॉप होता है जो सिर्फ स्टॉप करेगा, रिमूव नहीं करेगा. द सेकंड कमांड इज नेटवर्क डाउन, विच विल स्टॉप कंटेनर एंड देन रिमूव द कंटेनर. ओके. एंड उसके जितने भी अटैच्ड आर्टिफैक्ट्स होते हैं जैसे वॉल्यूम्स एंड नेटवर्क, वो सब कुछ रिमूव कर देगा. ठीक है, बढ़िया. We are done with the setting up our test network, but don't worry at all what is happening under the hood. In upcoming videos, I'll explain in pretty much detail once we dive into the deep dive into the particular component of it. So as of now, we have installed the prerequisites, we have installed the binary files, and we were able to run our test network. So in next video, we'll see their core components and what are the main actors in our use case. So till that time, बाय बाय, जय हिंद. आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम देखेंगे मोर ऑन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, और वी कैन कॉल इट एज चेन कोड इन हाइपरलेजर फैब्रिक टर्म. तो हम सबसे पहले समझेंगे कि कौन कौन से एक्टर्स है हमारे यूज केस में, किन के लिए हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेस देना है और किन्हें नहीं देना है, और देना भी हो तो किस टाइप का एक्सेस हमें उन्हें देना है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कौन राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, कौन रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा इन आर इकोसिस्टम. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बट हाँ, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने कम्युनिटी के साथ में, एंड लेट्स ग्रो टुगेदर. चलो गेट स्टार्टेड. ओके. सो ये प्रीवियस वीडियो का थोड़ा सा रिकैप है. हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था सेटिंग अप आवर Fabric samples and running our test network. तो test network run करने के लिए you have to go into the test network repository, a particular folder,
एंड देन सिंपली network.sh फाइल को अप करना है तो आपका कंटेनर सारे अप हो जाएंगे एंड देन यूजिंग docker ps command from CLI itself you can check it or you can check in your docker desktop आप docker desktop पे भी चेक कर सकते हैं और इसको डाउन करने के लिए always make sure that आप जब आप नेटवर्क अप करते हैं तो आपको उसको डाउन भी करना होता है you have to shut down that network नहीं तो it will went into the unexpected mode और वो इंटरप्ट हो जाता है ओके तो डाउन करने के लिए सिंपल डॉट नेटवर्क डॉट एस एच फाइल एंड डाउन कमांड सिंपली वो डाउन हो जाएगा ओके तो सबसे पहले हम अभी हमारे यूज केस को एक बार रिकैप कर लेते हैं सो वी हैव टू बिल्ड आवर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम यूजिंग ब्लॉकचेन राइट तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले रहेगा नेटवर्क सो लेट मी गेट द पॉइंटर ये हमारा सबसे पहले नेटवर्क है ओके नेटवर्क जो हमने इसको भी मैं एक बार डिटेल में बताऊंगा बट नेटवर्क अभी किस किस से कनेक्टेड है हमारे पास में ऑर्गेनाइजेशन को एक्ट कर रहा है एज अ हॉस्पिटल एज अ डायग्नोस्टिक सेंटर्स डॉक्टर्स है रिसर्चर्स है जो कि हमारे डेटा साइंटिस्ट होंगे और उनका पूरा फर्म जो हमारे डेटा को एग्रीगेट करके उसके ऊपर रिसर्च करेंगे एंड देन इंश्योरेंस कंपनीज जैसे पेशेंट्स की हेल्थ इंश्योरेंस होती है तो उनको क्लेम जो भी होता है पेशेंट विल गोइंग टू क्लेम द इंश्योरेंस कि ये भाई ये मुझे अभी इंश्योरेंस प्रोवाइड करो टू वेरीफाई दैट कि जो पेशेंट ने क्लेम किया है वो सही है या नहीं है वी नीड अ वैलिड डेटा और वो डेटा कहाँ से आएगा हमारे नेटवर्क से आएगा राइट सो दे कैन कनेक्ट विद द हॉस्पिटल्स और दे कैन चेक देयर हिस्ट्री कि इसने सच में डू वट एवर द क्लेम इज गोइंग टू जो भी हमारा पेशेंट क्लेम कर रहा है वो सच में वैलिड है कि नहीं है सो उसके लिए हमारा इंश्योरेंस कंपनी है देन फार्मा टू मैनेज द कंप्लीट फार्मास्यूटिकल नीड्स जिससे हमारे अगर कोई इंपॉर्टेंट सिचुएशंस आ जाए जैसे कोविड जैसे सिचुएशन थी तो हमें कुछ कुछ मेडिसिन को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बहुत सारे बात मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे रेनी सीजन में नए नए डिसीजंस आते हैं तो नए ट्रेंड्स आते हैं राइट बहुत सारे ट्रायल्स चलते रहता है सो टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल दोज थिंग्स वी हैव अटैच्ड द फार्मा एंड मोर इसके ऑन टॉप ऑफ इट एज वेल एंड वी हैव अ डायग्नोस्टिक सेंटर सो मोटा मोटा सिंपल सी बात यह है कि जितने भी हमारे हेल्थ केयर के एक्टर्स हैं हॉस्पिटल्स डॉक्टर और डायग्नोस्टिक सेंटर पेशेंट्स फार्मास्यूटिकल सेंटर्स इंश्योरेंस कंपनीज एंड रिसर्चर्स इनको हम एक नेटवर्क में लेके आएंगे और इसमें देखेंगे हम कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं ठीक है जैसे आपको मैं बहुत जल्दी एक रिकैप कर देता हूँ हॉस्पिटल क्या कर सकता है हॉस्पिटल कैन मैनेज द डॉक्टर्स एंड दे कैन गेट ऑल द पेशेंट डिटेल्स ठीक है जो जितने भी उनके पेशेंट्स आ रहे हैं उनके हॉस्पिटल में दे कैन मैनेज द पेशेंट एज वेल okay what doctors can do doctor can create a record for patient and can upload the prescription for the patient and then they can update the record of their prescription because अभी patient आया तो जैसे this is at day 1 उसका क्या रिपोर्ट था एट डे 10 उसका क्या रिपोर्ट है एट डे 20 और आफ्टर 30 डेज व्हाट इज द रिपोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट ये सारे रिकॉर्ड्स हमारे किस में जाएंगे हु इज द ऑथेंटिक पर्सन टू अपडेट दैट रिकॉर्ड डॉक्टर इज द ओनली ऑथेंटिक पर्सन क्योंकि पेशेंट तो कुछ भी कर सकता है वी कैन नॉट रिलाई ऑन पेशेंट कि पेशेंट कुछ भी अपडेट कर सकता है राइट सो वी हैव गिवन द ऑथेंटिसिटी की जो भी रिकॉर्ड्स होंगे वो डॉक्टर अपलोड करेगा या अपडेट करेगा सिस्टम में और पेशेंट के पास में कौन सी ओनरशिप होगी पेशेंट हैज द ओनरशिप टू चेक ऑल दिस प्रिस्क्रिप्शंस पूरी हिस्ट्री चेक कर सकता है वो कब क्या हुआ एंड वट एवर द रिपोर्ट्स गॉट जनरेटेड इन द सिस्टम दे कैन व्यू इट पेशेंट कैन व्यू इट और रिपोर्ट कहाँ से जनरेट होंगे हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर विल गोइंग टू अपलोड द रिपोर्ट्स अगेंस्ट दैट पेशेंट बेस्ड ऑन द हॉस्पिटल और हाँ डॉक्टर डायग्नोस्टिक ये सारे हमारे नेटवर्क से कनेक्टेड रहेंगे सो दे नो ईच अदर दैट्स द assumption एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी अभी फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या कर सकती है फार्मास्यूटिकल कंपनी कैन गेट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ पेशेंट बेस्ड ऑन द पेशेंट आईडी एंड देन अपडेट द मेडिसिन स्टॉक दो प्राइमरी टास्क यहाँ पे करेंगे हम इनका मोस्टली जो भी की मेडिसिन जैसे मैंने बोला वो अपडेट कर सकता है एंड गिव दिस प्रिस्क्रिप्शन or get this prescription from the DB and just hand it over to the patient जो भी उनको मेडिसिन दे that's understandable. Now researchers can collect the data. Now they can collect the data at multiple levels. They can collect the data of hospitals किस टाइप के पेशेंट्स आ रहे हैं किस टाइप के डिसीजेस जनरेट हो रही है what are the challenges doctor are facing what are the different different type of or what are the common diseases floating in the market something like that what are the challenges they are facing in the pharma side what are the challenges they are facing in the diagnostic center side all these type of data got collected at one place और उसके ऊपर रिसर्च कर सकता है हमारा डेटा साइंटिस्ट और जितने भी नए नए डिसीज आ रहे हैं या ऑलरेडी काफी कॉमन डिसीजेस के ऊपर नए वेरिएंट्स आ रहे हैं तो उन सारी चीजों का
रिसर्च कौन कर सकता है हमारे इस पे। तो अभी देखो यहाँ पे सिंपल सा फंडा ये है कि डेटा साइंटिस्ट इज अ वेल सेटअप फर्म, और ये खुद का हमारे गवर्नमेंट लेवल पे भी हो सकता है, या कोई प्राइवेट एंटिटी हो सकती है, या स्टेट एंटिटी हो सकती है, या ग्लोबल लेवल पे हो सकती है। ओके, तो इनका काम है सिंपल सा कि रिसर्च करना और वैलिड रिजल्ट्स प्रोवाइड करना। तो रिसर्च करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा डेटा लगता है, तो वो डेटा हमारे हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स और पेशेंट से कलेक्ट कर रहा है। इन एक्सचेंज ऑफ दैट रिसर्चर्स की कम्युनिटी इनको क्या करेंगे, रिवॉर्ड्स देंगे, कि दे विल स्पेंड सम टोकन ऑन देम, कि उनके लिए कुछ ग्रांट्स अप्रूव करेंगे, फॉर हॉस्पिटल्स ग्रांट्स, फॉर डॉक्टर्स सम प्रोविजंस दे विल गिव, एंड फॉर पेशेंट डिस्काउंट्स ऑन द कंसल्टेंसी फी, और डिस्काउंट एट द लेबोरेटरी, जैसे लेबोरेटरी सेंटर में, या जहाँ पे वो मेडिसिन सेंटर पे। These are the examples I'm giving, or they can give money directly as well. So it's up to the ecosystem कि हम किस तरह से उसको डिजाइन करना। In our use case, we are providing the rewards, okay, in terms of tokens. Now, insurance company can verify the patient details, and whatever the claims raised by the patient, they can approve it. जैसे उनका claim approve होता है, claim they will approve, उनके money जो भी है वो settlement हो जाएगा, that got get settled in the patient's account or in the patient wallet. Now let's try to understand the network part little bit. So network part में हमारा सबसे important, this is little now technical concept. We have our network. Network is connected with your IPFS, interplanetary file system, where we're gonna update our all the media files. जैसे हमारा एक्सरे हो गया, प्रिस्क्रिप्शन हो गया, ब्लड रिपोर्ट हो गया, जिसके अंदर वैलिड डेटा होता है, ठीक है, पीडीएफ्स और डॉक्यूमेंट्स और वीडियोस, जो भी हमें डेटा अपडेट करना है वो हम आईपीएफएस में करेंगे, ठीक है। और जो भी हमारा टेक्सचुअल फॉर्म डेटा होगा, विच इज सिंगल एंट्री सॉर्ट ऑफ थिंग, दैट वी गोना अपडेट इन आवर लेजर। Cool. Now we have here one more component called Node SDK backend. Node SDK backend क्या करता है, हमारा हमें एक Node SDKs बनाएंगे जिसके अंदर मल्टीपल APIs लिखेंगे, which will going to interact with my network, and network is going to interact with my smart contract. ठीक है, so this is, or smart contract will come under the network part, and this is our DB to manage the application level stuff, whatever the business logic we have to write, and then manage the user login, hospital data, and all those things we're gonna manage with respect to our database. And we will be having here one web application to consume our complete platform. तो जो भी हमारे पोर्टल्स के लॉगिन होंगे वो यहाँ पे हमारे वेब एप्लीकेशन होंगे, एंड देन पेशेंट विल ओन दिस मोबाइल ऐप। तो पेशेंट कैन सिंपली use the mobile app and consume whatever they are in the network. So this is more on the network side. So network में हमारा क्या होगा, it's like a private network, right? So we have here orderer concepts, order services to manage the consensus mechanism, and here we have one channel. Inside that channel we will be having the organization. This is org1 and org2. Org2, each organization will have their own peer 0, peer 0. In as of now, this is what we going to have in our network, which is going which we are going to set it up. So here we will be having org1, org2 with one peer each, one peer each, and they will have their smart contract. जो अभी हम smart contract लिखेंगे, we have to deploy that smart contract explicitly on both the organization. We have to take the approval, and जिससे हमारी चीजें automate हो सके. Now what is this organization? Organization is a high level entity in the complete blockchain ecosystem, which is going to manage the infra for the smart contract, and uh, for, in short, they are the responsible for running the network. Now there are multiple things to consider when we are talking about organization. यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, both technical and operational. टेक्निकली आपको ऑर्गेनाइजेशन किसे बनाना चाहिए, जो भी मल्टी पार्टीज होती है, हमें सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्ट्रेच करूंगा, ब्लॉकचेन की यूज करते हैं हम। ब्लॉकचेन यूज करते हैं व्हेन वी हैव टू कनेक्ट विद मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर एंड टू फॉर्म अ कंसेंसस मैकेनिज्म, ठीक है। सो टू क्रिएट अ ट्रस्टलेस इकोसिस्टम, so now we have hospital is a complete different entity. We have insurance, which is a complete different entity. We have a government altogether, which is a complete different entity, which is going to analyze the complete ecosystem. Ki all they will uh, they will play a part in the governance mechanism. कि make sure करेंगे कि जो भी policies सही से apply हो रही है नहीं हो रही है, are they breaching any data privacy and consensus part of the patient and all those things. So these all are the different entities altogether. They can play a role as an organization. Okay, so this is a very high level definition of organization. Who can play a role of organization and who can play a role of the peer. Peer is someone a part in the organization.
or we can call it as a, it's a technical part or technical component where we are going to deploy our smart contracts. So if you need multiple versions of smart contracts to deploy it on different level, जितना ज्यादा आपको segregation करना होगा कि let's say this block of people will going to perform this task, this block of people is going to perform this task, but this two block is a part of one big block. So this one big block will act as organization, this small block will act as a peer, this small block as a act as a peer 1 and 2, और इनके रोल्स को हम डिफाइन करेंगे कि peer 1 कुछ अलग टास्क परफॉर्म करे, peer 2 कुछ अलग टास्क परफॉर्म करे, वो हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख के रखेंगे. ठीक है. So this is how we design our smart contract. Okay, and this is just a block explorer to track all the blockchain activities over here. Cool. So I think this is what we have with respect to the PPT. Now let's move towards our smart contract stuff. So where exactly we're going to write it, right? तो हम इसको कहाँ लिखेंगे? सिंपल सी बात है. As of now, you have the Fabric samples. So inside Fabric samples, if you open any asset transfer basic one, so here we can see application gateways and then chain code. Chain code is external chain code, Go, Java, JavaScript. So these are the different languages they support to write the chain code. We are using JavaScript because I know JavaScript, I know Go, but most of our audience know the JavaScript. So that's why we are going to use the JavaScript Go. So asset transfer, this is asset transfer.js. This is nothing but the chain code code. The main logic is written in this particular file. So we need to rewrite this file, or we need to create a similar sort of file for our use case. Okay. So you can go through this particular, please go through to this file. They have the multiple functions over here. Asset transfer. Asset transfer is the function name, sorry, class name, which is nothing but the smart contract or chain code name as well. So you can see the create asset is here, read asset is here, update asset, delete asset, right? X assets exits or not, whatever asset is exit, they're gonna check based on the ID. Transfer asset is here. So here are all different functions which we required. So what we're gonna do, we're gonna create a similar function, similar smart contract over here. So we can create here one new file called electronic health record EHR chain code .js. chain code.js. ठीक है. EHR chain code.js. So inside this very first, before simply jumping into the writing chain code logic, we need to understand different actors in our ecosystem. We have patients. Hey, hi. So writing smart contracts or chain code, we're gonna see in the next video. See you there. Jai Hind. तो हम सबसे पहले समझेंगे कि कौन कौन से एक्टर्स है हमारे यूज केस में, किन के लिए हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेस देना है और किन्हें नहीं देना है, और देना भी हो तो किस टाइप का एक्सेस हमें उन्हें देना है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कौन राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, कौन रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा इन आर इकोसिस्टम. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बट हाँ, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने कम्युनिटी के साथ में, एंड लेट्स ग्रो टुगेदर. चलो गेट स्टार्टेड. ओके. सो ये प्रीवियस वीडियो का थोड़ा सा रिकैप है. हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था सेटिंग अप आर Fabric samples and running our test network. तो test network run करने के लिए have to go into the test network repository, a particular folder, and then simply network.sh file को up करना है, तो आपका कंटेनर सारे up हो जाएंगे. And then using docker ps command from CLI itself you can check it, or you can check in your docker desktop. docker desktop में भी check कर सकते हैं. और इसको डाउन करने के लिए always make sure that आप जब आप नेटवर्क अप करते हैं तो आपको उसको डाउन भी करना होता है. You have to shut down that network, नहीं तो it will went into the unexpected mode और वो इंटरप्ट हो जाता है. ओके. तो डाउन करने के लिए सिंपल डॉट नेटवर्क डॉट sh फाइल एंड डाउन कमांड, सिंपली वो डाउन हो जाएगा. ओके. तो सबसे पहले हम अभी हमारे यूज केस को एक बार रिकैप कर लेते हैं. सो वी हैव टू बिल्ड आवर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम यूजिंग ब्लॉकचेन, राइट. तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले रहेगा नेटवर्क. सो लेट मी गेट द पॉइंटर. ये हमारा सबसे पहले नेटवर्क है. ओके. नेटवर्क जो हमने
इसको भी मैं एक बार डिटेल में बताऊंगा, बट नेटवर्क अभी किस किस से कनेक्टेड है? हमारे पास में ऑर्गेनाइजेशन कौन एक्ट कर रहा है? एज अ हॉस्पिटल, एज अ डायग्नोस्टिक सेंटर्स, डॉक्टर्स है, रिसर्चर्स है जो कि हमारे डेटा साइंटिस्ट होंगे, और उनका पूरा फर्म जो हमारे डेटा को एग्रीगेट करके उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। एंड देन इंश्योरेंस कंपनीज, जैसे पेशेंट्स की हेल्थ इंश्योरेंस होती है, तो उनको क्लेम जो भी होता है, पेशेंट विल गोइंग टू क्लेम द इंश्योरेंस कि ये भाई ये मुझे अभी इंश्योरेंस प्रोवाइड करो, टू टू वेरीफाई दैट कि जो पेशेंट ने क्लेम किया है वो सही है या नहीं है। वी नीड अ वैलिड डेटा, और वो डेटा कहाँ से आएगा? हमारे नेटवर्क से आएगा, राइट? सो दे कैन कनेक्ट विद द हॉस्पिटल्स, और दे कैन चेक देयर हिस्ट्री कि इसने सच में डू वट एवर द क्लेम इज गोइंग टू, जो भी हमारा पेशेंट क्लेम कर रहा है वो सच में वैलिड है कि नहीं है। सो उसके लिए हमारा इंश्योरेंस कंपनी है। देन फार्मा, टू मैनेज द कंप्लीट फार्मास्यूटिकल नीड्स, जिसे हमारे अगर कोई इंपॉर्टेंट सिचुएशंस आ जाए, जैसे कोविड जैसे सिचुएशन थी, तो हमें कुछ कुछ मेडिसिन को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बात, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे रेनी सीजन में नए नए डिसीजंस आते हैं, तो नए ट्रेंड्स आते हैं, राइट? बहुत सारे ट्रायल्स चलते रहता है। सो टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल दोज थिंग्स, वी हैव अटैच्ड द फार्मा एंड मोर इसके ऑन टॉप ऑफ इट एज वेल, एंड वी हैव अ डायग्नोस्टिक सेंटर। सो मोटा मोटा सिंपल सी बात यह है कि जितने भी हमारे हेल्थ केयर के एक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर और डायग्नोस्टिक सेंटर, पेशेंट्स, फार्मास्यूटिकल सेंटर्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड रिसर्चर्स, इनको हम एक नेटवर्क में लेके आएंगे, और इसमें देखेंगे हम कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? जैसे आपको मैं बहुत जल्दी एक रिकैप कर देता हूँ। हॉस्पिटल क्या कर सकता है? हॉस्पिटल कैन मैनेज द डॉक्टर्स, एंड दे कैन गेट ऑल द पेशेंट डिटेल्स, ठीक है? जो जितने भी उनके पेशेंट्स आ रहे हैं उनके हॉस्पिटल में, दे कैन मैनेज द पेशेंट एज वेल। ओके, what doctors can do? Doctor can create a record for patient, and can upload the prescription for the patient, and then they can update the record of their prescription, because अभी patient आया तो जैसे this is at day 1, उसका क्या रिपोर्ट था, एट डे 10 उसका क्या रिपोर्ट है, एट डे 20 और आफ्टर 30 days व्हाट इज द रिपोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट। ये सारे रिकॉर्ड्स हमारे किस में जाएंगे? हु इज द ऑथेंटिक पर्सन टू अपडेट दैट रिकॉर्ड? डॉक्टर इज द ओनली ऑथेंटिक पर्सन, क्योंकि पेशेंट तो कुछ भी कर सकता है। वी कैन नॉट रिलाई ऑन पेशेंट कि पेशेंट कुछ भी अपडेट कर सकता है, राइट? सो वी हैव गिवन द ऑथेंटिसिटी कि जो भी रिकॉर्ड्स होंगे वो डॉक्टर अपलोड करेगा या अपडेट करेगा सिस्टम में। और पेशेंट के पास में कौन सी ओनरशिप होगी? पेशेंट हैज द ओनरशिप टू चेक ऑल दिस प्रिस्क्रिप्शंस, पूरी हिस्ट्री चेक कर सकता है वो कब क्या हुआ, एंड वट एवर द रिपोर्ट्स गॉट जनरेटेड इन द सिस्टम, दे कैन व्यू इट, पेशेंट कैन व्यू इट। और रिपोर्ट कहाँ से जनरेट होंगे? हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर विल गोइंग टू अपलोड द रिपोर्ट्स अगेंस्ट दैट पेशेंट बेस्ड ऑन द हॉस्पिटल। और हाँ, डॉक्टर, डायग्नोस्टिक, ये सारे हमारे नेटवर्क से कनेक्टेड रहेंगे, सो दे नो ईच अदर। दैट्स द assumption। एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी, अभी फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या कर सकती है? फार्मास्यूटिकल कंपनी कैन गेट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ पेशेंट बेस्ड ऑन द पेशेंट आईडी, एंड देन अपडेट द मेडिसिन स्टॉक। दो प्राइमरी टास्क यहाँ पे करेंगे हम। इनका मतलब मोस्टली जो भी की मेडिसिन जैसे मैंने बोला वो अपडेट कर सकता है, एंड गिव दिस प्रिस्क्रिप्शन or get this prescription from the DB and just hand it over to the patient जो भी उनको मेडिसिन दे। That's understandable. Now researchers can collect the data. Now they can collect the data at multiple levels. They can collect the data of hospitals, किस टाइप के पेशेंट्स आ रहे हैं, किस टाइप के डिसीजेस जनरेट हो रही है, व्हाट आर द चैलेंजेस डॉक्टर आर फेसिंग, व्हाट आर द डिफरेंट patient different type of, or what are the common diseases floating in the market, something like that. What are the challenges they are facing in the pharma side, what are the challenges they are facing in the diagnostic center side. All these type of data got collected at one place, और उसके ऊपर रिसर्च कर सकता है हमारा डेटा साइंटिस्ट। और जितने भी नए नए डिसीज आ रहे हैं या ऑलरेडी काफी कॉमन डिसीजेस के ऊपर नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो उन सारी चीजों का रिसर्च कौन कर सकता है? हमारे इस पे। तो अभी देखो यहाँ पे सिंपल सा फंडा ये है कि डेटा साइंटिस्ट इज अ वेल सेटअप फर्म, और ये खुद का हमारे गवर्नमेंट लेवल पे भी हो सकता है, या कोई प्राइवेट एंटिटी हो सकती है, या स्टेट एंटिटी हो सकती है, या ग्लोबल लेवल पे हो सकती है। ओके, तो इनका काम है सिंपल सा कि रिसर्च करना और वैलिड रिजल्ट्स प्रोवाइड करना। तो रिसर्च करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा डेटा लगता है, तो वो डेटा हमारे हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स और पेशेंट से कलेक्ट कर रहा है। इन एक्सचेंज ऑफ दैट, रिसर्चर्स की कम्युनिटी इनको क्या करेंगे? रिवॉर्ड्स देंगे, कि दे विल स्पेंड सम टोकन ऑन देम, कि उनके लिए कुछ ग्रांट्स अप्रूव करेंगे, फॉर हॉस्पिटल्स ग्रांट्स, फॉर डॉक्टर्स सम प्रोविजंस दे विल गिव, एंड फॉर पेशेंट डिस्काउंट्स ऑन द कंसल्टेंसी फी, और डिस्काउंट एट द लेबोरेटरी, जैसे लेबोरेटरी सेंटर में, या जहाँ पे वो मेडिसिन सेंटर पे।
These are the examples I'm giving, or they can give money directly as well. So it's up to the ecosystem कि हम किस तरह से उसको डिजाइन करना. In our use case, we are providing the rewards, okay, in terms of tokens. Now, insurance company can verify the patient details, and whatever the claims raised by the patient, they can approve it. जैसे उनका claim approve होता है, claim they will approve, उनके money जो भी है वो settlement हो जाएगा, that got get settled in the patient's account or in the patient wallet. Now let's try to understand the network part little bit. So network part में हमारा सबसे important, this is little now technical concept. We have our network. Network is connected with your IPFS, interplanetary file system, where we're gonna update our all the media files. जैसे हमारा एक्सरे हो गया, प्रिस्क्रिप्शन हो गया, ब्लड रिपोर्ट हो गया, जिसके अंदर वैलिड डेटा होता है. ठीक है, पीडीएफ्स और डॉक्यूमेंट्स और वीडियोस, जो भी हमें डेटा अपडेट करना है वो हम आईपीएफएस में करेंगे. ठीक है, और जो भी हमारा टेक्सचुअल फॉर्म डेटा होगा, विच इज सिंगल एंट्री सॉर्ट ऑफ थिंग, दैट वी गोना अपडेट इन आवर लेजर. Cool. Now we have here one more component called Node SDK backend. Node SDK backend क्या करता है, हमारा हमें एक Node SDKs बनाएंगे जिसके अंदर मल्टीपल APIs लिखेंगे, which will going to interact with my network, and network is going to interact with my smart contract. ठीक है, so this is, or smart contract will come under the network part. And this is our DB to manage the application level stuff, whatever the business logic we have to write, and then manage the user login, hospital data, and all those things we're gonna manage with respect to our database. And we will be having here one web application to consume our complete platform. तो जो भी हमारे पोर्टल्स के लॉगिन होंगे वो यहाँ पे हमारे वेब एप्लीकेशन होंगे. एंड देन पेशेंट विल ओन दिस मोबाइल ऐप. तो पेशेंट कैन सिंपली use the mobile app and consume whatever they are in the network. So this is more on the network side. So network में हमारा क्या होगा? It's like a private network, right? So we have here orderer concepts, order services to manage the consensus mechanism, and here we have one channel. Inside that channel, we will be having the organization. This is org one and org two. Org two, each organization will have their own peer zero, peer zero. In as of now, this is what we going to have in our network, which is going which we are going to set it up. So here we will be having org1, org2 with one peer each, one peer each, and they will have their smart contract. जो भी हम smart contract लिखेंगे, we have to deploy that smart contract explicitly on both the organization. We have to take the approval, and जिससे हमारी चीजें automate हो सके. Now what is this organization? Organization is a high level entity in the complete blockchain ecosystem, which is going to manage the infra for the smart contract, and uh, for, in short, they are the responsible for running the network. Now there are multiple things to consider when we are talking about organization. यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, both technical and operational. टेक्निकली आपको ऑर्गेनाइजेशन किसे बनाना चाहिए? जो भी मल्टी पार्टीज होती है, हमें सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्ट्रेच करूंगा, ब्लॉकचेन की यूज करते हैं. हम ब्लॉकचेन यूज करते हैं व्हेन वी हैव टू कनेक्ट विद मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर एंड टू फॉर्म अ कंसेंसस मैकेनिज्म. ठीक है, सो टू क्रिएट अ ट्रस्टलेस इकोसिस्टम. So now we have hospital is a complete different entity. We have insurance, which is a complete different entity. We have a government altogether, which is a complete different entity, which is going to analyze the complete ecosystem. Ki all they will uh, they will play a part in the governance mechanism. कि make sure करेंगे कि जो भी policies सही से apply हो रही है नहीं हो रही है. Are they breaching any data privacy and consensus part of the patient and all those things. So these all are the different entities altogether. They can play a role as an organization. Okay, so this is a very high level definition of organization. Who can play a role of organization and who can play a role of the peer. Peer is someone a part in the organization, or we can call it as it's a technical part or technical component where we are going to deploy our smart contracts. So if you need multiple versions of smart contracts to deploy it on different level, जितना ज्यादा आपको सेग्रीगेशन करना होगा कि लेट्स से दिस ब्लॉक ऑफ पीपल विल गोइंग टू परफॉर्म दिस टास्क, दिस ब्लॉक ऑफ पीपल इज गोइंग टू परफॉर्म दिस टास्क, बट दिस टू ब्लॉक is a part of one big block. So this one big block will act as organization, this small block will act as a peer, this small block act as a peer 1 and 2. और इनके रोल्स को हम डिफाइन करेंगे कि peer 1 कुछ अलग टास्क परफॉर्म करे, peer 2 कुछ अलग टास्क परफॉर्म करे, वो हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख के रखेंगे. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डिजाइन आवर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. Okay, and this is just a block explorer to track all the blockchain activities over here. Cool. So
I think this is what we have with respect to the PPT. Now let's move towards our uh, smart contract stuff. So where exactly we gonna write it, right? तो हम इसको कहाँ लिखेंगे? सिंपल सी बात है, एज ऑफ नाउ यू हैव द fabric samples. So inside fabric samples, if you open any asset transfer basic one, so here we can see application gateways, and then chain code. Chain code is external chain code, Go, Java, JavaScript. So these are the different languages they support to write the chain code. We are using JavaScript because I know JavaScript, I know Go, but most of our audience know the JavaScript. So that's why we are going to use the JavaScript Go. So asset transfer. This is asset transfer.js. This is nothing but the chain code uh, code. The main logic is written in this particular file. So we need to rewrite this file, or we need to create a similar sort of file for our use case. Okay. So you can go through this particular, please go through to this file. They have the multiple functions over here. Asset transfer. Asset transfer is the function name, sorry, class name, which is nothing but the smart contract or chain code name as well. So you can see the create asset is here, read asset is here, update asset, delete asset, right? X assets exits or not. Whatever asset is exit, they're gonna check based on the ID. Transfer asset is here. So here are all different functions which we required. So what we're gonna do, we're gonna create a similar function, similar smart contract over here. So we can create here one new file called electronic health record EHR chain code dot js. chain code dot js. Okay. EHR chain code dot js. So inside this very first, before simply jumping into the writing chain code logic, we need to understand different actors in our ecosystem. We have patients. Okay, so let's get started, guys. तो सबसे पहले मुझे आपको एक चीज बतानी है. In previous video we have seen the deployment of chain code. Okay, and अगर if you cannot able to see CA order, CA org1, CA org2 in your Docker containers, आप प्लीज जाके एक बार चेक कीजिए. जब हमने हमारा नेटवर्क सेटअप किया था, राइट, तो क्या आपको ये 3 कंटेनर्स दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? अगर ये 3 कंटेनर्स नहीं दिख रहे होंगे, तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डाउन योर नेटवर्क एंड मेक इट अप अगेन. और वो डाउन कैसे करना है हमें? जस्ट अ सेकेंड. हाँ, फर्स्ट वी हैव टू डाउन द नेटवर्क. डाउन करने का कमांड मैं ऑलरेडी रीडमी फाइल में भी है, एंड देन आई हैव गिवन दिस इन आवर पीपीटी एज वेल. वी हैव टू गो इन fabric samples. Sorry. Change directory. Fabric samples test network. Right, here we have to do ls. Here I can see my manage file, मैनेज स्क्रिप्ट. जहाँ पे हमारी मैनेज स्क्रिप्ट है वहीं पे हमें कमांड्स रन करना है. तो हम रन करेंगे नेटवर्क डाउन का, DOWN डाउन. तो सी, आई एम नॉट गोइंग टू रन दिस कमांड क्योंकि मेरा नेटवर्क सही से चल रहा है. अगर आपका नहीं चल रहा होगा तो सबसे पहले आपको नेटवर्क को डाउन करना पड़ेगा, एंड दैट वी हैव टू रिमूव द वॉल्यूम्स. आपको वॉल्यूम्स कैसे रिमूव करना है? आप CLI से भी कर सकते हैं, बट इफ यू आर यूजिंग डॉकर डेस्कटॉप, सिंपली यू हैव टू सिलेक्ट दिस ऑल एंड डिलीट. ये कब करना है? डॉकर जब आपके कंटेनर सारे बंद हो जाएंगे तब करना है, पहले ही नहीं करना है, नहीं तो पूरा इधर उधर हो जाएगा. ठीक है, इसको डॉकर कंटेनर जब बंद हो जाएगा, जब आपका नेटवर्क बंद हो जाएगा, तब जाके आपको वॉल्यूम्स को डिलीट करना है, पहले डिलीट नहीं करना है. रिमेंबर दैट. ओके. और अगर यहाँ पे कोई एग्जिटेड कंटेनर भी दिखता है, आपने जब डाउन कर दिया फिर भी आपको कोई कंटेनर रनिंग में दिख रहा होगा यहाँ पे, तभी भी आपको ऐसा ऐसा सिलेक्ट करना है और फिर एक्सप्लिसिटली जाके उसको डिलीट कर देना. खत्म. ठीक है, अभी नहीं करना है जब नेटवर्क चालू हो सब सही से. अगर आपके पास में CA ऑर्डर, CA ऑर्गन और दिख रहा है, तब कुछ नहीं करना है, तब सब कुछ सही चल रहा है मतलब हमारा. ओके, नाउ लेट्स गो टू हियर. अब हम आते हैं हमारे मेन वीडियो, मेन कंटेंट, वेयर वी हैव टू राइट अ स्क्रिप्ट टू इंटरेक्ट विद दैट चेन कोड. तो अभी मेरे पास में चेन कोड डिप्लॉयड है. अगर आपका चेन कोड डिप्लॉयड होगा तो एक और चीज होगी विच इज वेरी गुड वन, कि आपको 2 कंटेनर्स दिखेंगे, विच इज
प्रॉपर नेमिंग दिस वन, ऐसा कुछ नाम रहेगा उसका, डेव पीयर 0 और टू एग्जाम्पल हाइफन टेस्ट 01 जो हमारे चेन कोड का नाम था, हमने स्क्रिप्ट में डिप्लॉय करते समय दिया था चेन कोड का नाम। एंड दिस इज द लॉग्स ऑफ योर चेन कोड, जब हमारा चेन कोड डिप्लॉय होगा उसके कंटेनर्स के लॉग है ये, कि सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एंड इस्टेब्लिश द कम्युनिकेशन विद द पीयर नोड। सो मतलब हमारा अभी जो चेन कोड है विच इज रेडी टू यूज। ओके, ऐसे दो हो गए, दो क्यों होंगे, क्योंकि हमने org1 और org2 दोनों के पीयर पे हमारा चेन कोड डिप्लॉय किया है, इसलिए हमारे पास में इसके दो कंटेनर्स होंगे। दिस इज फॉर org2 यू कैन सी, एंड दिस इज फॉर org1। ओके, अगर आपको ये कंटेनर्स दिख रहा है मतलब आपका चेन कोड सही से डिप्लॉय हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स यूजिंग द चेन कोड। हाँ, यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया है विच इज कॉल्ड सर्वर नोड एसडीके। सर्वर नोड एसडीके ये मैंने बनाया है। इसके अंदर सिंपल वॉलेट दिखेगा आपको, एक जस्ट पैकेज डॉट जेसन फाइल एंड रजिस्टर एडमिन डॉट जेएस एंड रजिस्टर यूजर डॉट जेएस। नाउ देखो, uh, अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ वी आर ट्राइंग टू इंटरेक्ट विथ आवर चेन कोड। बट चेन कोड को कौन इंटरेक्ट कर सकता है, चेन कोड को इंटरेक्ट करना इट्स नॉट दैट मच इजी, हम उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। चेन कोड को एक्सेस करने के लिए पहले हमें नेटवर्क का एक्सेस लेना पड़ेगा, उसके अंदर हमारे एक आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, एंड देन उस आइडेंटिटी को हमें उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा चेन कोड डिप्लॉय है, तो हम ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करेंगे एंड देन ऑर्गेनाइजेशन कैन स्पीक विद द चेन कोड। ठीक है, दिस इज द हायरार्की, नेटवर्क, ऑर्गेनाइजेशन एंड देन चेन कोड। वो काफी अंदर एकदम क्लोज्ड एनवायरनमेंट में होता है, कोई भी जाके उसको एक्सेस नहीं कर सकता। सो डू दैट, ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एडमिन क्रेडेंशियल्स बनाएंगे विथ वन ऑर्गेनाइजेशन, और फिर उसका एक यूजर बनाएंगे वो ऑर्गेनाइजेशन पे, और फिर वो यूजर हैज द आइडेंटिटी ऑन द ऑर्गेनाइजेशन सो दे कैन कम्युनिकेट विद दैट चेन कोड। सो दैट्स व्हाट वी गोना डू। परफेक्ट। सो सबसे पहले हमें करना है रजिस्टर, एडमिन को रजिस्टर करना है। तो मैंने ऑलरेडी रजिस्टर करके रखा है, सो here पे मे बी वी माइट गेट एरर, बट और मे बी से कि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, बट आपके केस में ऐसा नहीं होगा, यू विल गेट दिस एम्प्टी और ओके। So see, let's first try to understand what is happening in this file. So Fabric CA services, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने क्या किया है, हम Fabric CA client and Fabric network ये दो पैकेजेस को यूज कर रहे हैं to create our certificates and to create the gateway for to communicate with our chain code. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पाथ, ये देखो ये जो पाथ है ना, लाइन नंबर 17, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होता है और फ्यूचर में हम इसको चेंजेस करने वाला है, बट एज ऑफ नाउ जस्ट रिमेम्बर, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन बना है org1 उसके कनेक्शन डॉट जेसॉन पास कर रहे हैं, ताकि इस स्क्रिप्ट्स को पता रहे कि हम कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रेडेंशियल्स बना रहे हैं। ठीक है, सो वी आर यूजिंग हियर दैट ऑर्गेनाइजेशन, और वो आपको कहाँ पे मिलेगा, लेट मी क्विकली शो यू दैट पाथ, फैब्रिक सैंपल्स है, जस्ट चेक दैट पाथ। यहाँ पे मैं एक पाथ पीछे आया, क्योंकि मैं ये वाली जो फाइल है मेरी वो इसके अंदर है, सर्वर के अंदर है, सर्वर नोड एसडीके के अंदर है, तो आई came back one directory back and then I went into the fabric samples, और उसके बाद में फिर मैं गया टेस्ट नेटवर्क के अंदर, राइट, फिर टेस्ट नेटवर्क के अंदर जाने के बाद में मैं गया ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर गया मैं, फिर मैं गया पीयर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, फिर पीयर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हियर आई कैन सी org1 एंड org2। अब ये जो चीजें है ना, ये वी कॉल्ड इट एज सर्ट्स, सर्टिफिकेट्स जो बनते हैं ये, या आर्टिफैक्ट्स, ये जब आपका नेटवर्क सही से डिप्लॉय होता है या सही से कॉन्फ़िगर होता है तभी बनते हैं, ये डायनामिकली क्रिएटेड फाइल्स होते हैं। ओके, रिमेंबर दैट। देन org1 के अंदर क्या है, हियर आई कैन सी योर CA, MSP, peers, TLS cert, user certs, so I'll check, I'll go in the org1, इसके अंदर मुझे कनेक्शन फाइल भी है यहाँ पे, राइट, let me zoom in more, so here you can see the connection.org.json, connection-org1.json, तो ये जो connection -org1.json जो है, इस पर्टिकुलर फाइल को हम कर रहे हैं यूज फॉर सेटिंग कनेक्शन विथ द नेटवर्क। इसके अंदर क्या दिया है, हमारे इसके अंदर पैम्प फाइल्स है, जो TLS सर्ट होते हैं, वो हैप्पी इन्होंने ऑलरेडी ऑथेंटिकेशन देखे रखा है कि भाई दिस इज द पाथ, दिस इज द देयर DNS व्हिच वी नीड टू यूज टू कनेक्ट इन योर लोकल होस्ट, एंड देन दिस इज देयर पाथ, दिस इज देयर प्राइवेट की पैम्प फाइल टू get you the access. Okay, perfectly fine. So remember that this is a very critical
sorry for the voice. This is very critical stage and the steps which you need to remember while writing this particular script. So first stage हो गया हमारा path assign करना, giving the proper credential. Let me zoom out little bit. It's too zoomed in. Path credential सही से path देना, and then we are using a CA org1. Just I have shown you here. We are using here CA orderer 1, CA org1 orderer for registering the acting as a certificate authority. CA मतलब certificate authority होता है, org1 के certificate authority को हम use कर रहे हैं. Then we are just passing a wallet as a path कि आपको जो credential हो कहाँ पे create करना है, मेरे wallet folder में create करना है. And then you have to create okay, this is my register, so we have to check first admin. सो एडमिन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एडमिन का क्रेडेंशियल ऑलरेडी बना है कि वो चेक करेंगे. अगर नहीं बना है तो देन वी गोना क्रिएट द एडमिन क्रेडेंशियल एंड वी हैव टू रिमेंबर दैट वी आर क्रिएटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ X509. ओके, X509 टाइप का सर्टिफिकेट हम क्रिएट कर रहे हैं. कूल. एंड हियर वी आर पासिंग द रोल एंड सीक्रेट्स. उसका नाम क्या है, आईडी एंड द सीक्रेट. So इसके लिए कैसे क्या करना है आपको, सबसे पहले रिमेंबर दिस कमांड. नाउ यू हैव टू डू दिस कमांड फर्स्ट. नोड रजिस्टर ओके माय बैड. सबसे पहले आपको डायरेक्टरी चेंज करनी है. यू हैव टू कम, यू हैव टू गो इनटू द सर्वर. ls करो. यहाँ पे आया मेरा सर्वर नोड. जस्ट चेंज डायरेक्टरी टू सर्वर नोड SDK. यहाँ पे आया मैं, ls करेंगे. Here I can see register admin.js, right? So now I will run this register admin.js. रजिस्टर किया, देखते क्या होता है. टेकिंग टाइम. या ऑलरेडी एग्जिस्ट. इसने क्या बताया मुझे, आइडेंटिटीज ऑलरेडी एग्जिस्ट. अगर आपके केस में वो सक्सेसफुल आपको देगा. एंड देन सक्सेसफुल होने के बाद में यहाँ पे वॉलेट में admin.id यहाँ पे ऑलरेडी दिखेगा यहाँ पे. ओके, ठीक है. नाउ we have created the admin certificate. Now using this admin certificate, we'll create a user credential, and then using that user credential, we're gonna interact with our ledger and chain code. Cool. ये पहली स्टेप हमारी हो गई. Now second stage is to create user certificate or user credential. Now यहाँ पे मोर और लेस ये फाइल सेम ही रहेंगी, बट इसमें थोड़े से एड ऑन थिंग्स होंगे. यहाँ पे हम गेटवे भी इंपोर्ट कर रहे हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम है. हमने क्या किया, वॉलेट क्रिएट किया. हम चेक कर रहे हैं, पहले ये राधा नाम से मैंने क्रेडेंशियल क्रिएट किया था, सो वो ऑलरेडी मेरे वॉलेट में क्रिएटेड है. तो विल ट्राई टू क्रिएट अ न्यू क्रेडेंशियल हियर. तो राधा क्रिएटेड है क्रेडेंशियल, बट वो कैसे क्रिएट कर रहा है पहले एक बार फ्लो समझ लेते हैं. सो फर्स्ट वो एडमिन वॉलेट चेक कर रहा है. अगर एडमिन क्रेडेंशियल अवेलेबल है तो आगे जाएगा, नहीं तो बोलेगा कि प्लीज एनरोल द एडमिन, यू डोंट हैव एडमिन क्रेडेंशियल. ओके, एंड देन उसके बाद में विल गेट द प्रोवाइडर आइडेंटिटी. जैसे हमारे एडमिन प्रोवाइडर एडमिन क्रेडेंशियल्स लेके उसका अप्रूवल एज अ साइनिंग अथॉरिटी. एंड देन वी आर क्रिएटिंग द सीक्रेट्स फॉर राधा, माय न्यू यूजर बेस्ड ऑन org1. ओके, एंड उसके बाद में मैं ये देखो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स होता है. सो दिस इज माय ओल्ड एट्रीब्यूट्स वेयर वी कैन पास कि आपका जो क्रेडेंशियल्स है उसके अंदर हम मेटा डेटा पास कर सकते हैं. ठीक है, मेटा डेटा लाइक रोल, कि ये जो यूजर है क्या है, लाइक व्हाट इज द रोल, इन्वेस्टर, डॉक्टर, हॉस्पिटल, इंश्योरेंस कंपनी, समथिंग लाइक दैट, राइट. हु इज योर राधा क्या रोल परफॉर्म करेंगे आपके पूरे इकोसिस्टम में, यहाँ पे हम उसका रोल परफॉर्म कर सकते हैं. सो जब हम एक्चुअल हमारा चेन कोड लिखेंगे तो आई विल टेल यू कि डिफरेंट एक्टर्स कैसे है. विल गो इन मोर कॉम्प्लेक्स देन दिस वन, मोर कॉम्प्लेक्सिटी, बट आई डोंट नो, जस्ट you can skip this part, but just for understanding कि हम यहाँ पे मेटा डेटा पास कर सकते हैं अपने क्रेडेंशियल्स के साथ में, जिसके साथ में हम लिख सकते हैं कि इसकी एज क्या है, इसका रोल क्या है, एनीथिंग, वॉट एवर द यूजफुल डेटा यू वांट टू गिव फॉर योर यूज केस. एंड देन जस्ट वो एनरोल हो जाएगा. इसका भी हम X509 सर्टिफिकेट क्रिएट करेंगे. यहाँ तक हो गया कि हमारा आइडेंटिटी क्रिएट हो गया सक्सेसफुली और वो वॉलेट में स्टोर हो गया. ठीक है, इतना क्लियर है. अब उसके बाद में क्या कर रहे हैं हम अब इसके बाद में मैंने स्क्रिप्ट लिखी है टू इंटरेक्ट विथ लेजर. तो सबसे पहले हम गेटवे सेटअप करेंगे. ठीक है, यहाँ पे मैंने गेटवे सेटअप किया लाइन नंबर 74 पे. गेटवे सेटअप करने के लिए आई एम मेकिंग अ कनेक्शन यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ राधा. एंड देन हम डिस्कवर कर रहे हैं, हमारे कनेक्शन बना रहे, कनेक्ट सीसीपी इज लाइक अबव, हमने जो पाथ डिफाइन की थी वही है कनेक्शन और की. देन आई एम गोइंग इनसाइड चैनल 1. ओके, मेरे नेटवर्क के चैनल, माई चैनल में जा रहा हूँ, सॉरी,
मेरे नेटवर्क है, मेरा नेटवर्क के साथ में कनेक्ट बनाया, उस गेटवे को यूज करके हम वी आर ट्राइंग टू एक्सेस दी माई चैनल। जैसे वो माई चैनल एक्सेस हो जाएगा यूजिंग इनसाइड दैट नेटवर्क, मेरे माई चैनल के नेटवर्क के अंदर आई एम ट्राइंग टू गेट द कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट 01। ठीक है, फिर टेस्ट 01 के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे मैं दो ट्रांजैक्शन परफॉर्म करूंगा। सबसे पहला रहेगा मेरा सबमिट ट्रांजैक्शन एंड दूसरा रहेगा यूएलएट ट्रांजैक्शन। अभी जो मेरा सबमिट ट्रांजैक्शन है, इसमें क्या हो रहा है, सबमिट ट्रांजैक्शन में मैं इनिट लेजर को कॉल कर रहा हूँ, ये राइट ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं राइट ऑपरेशन कर रहा हूँ, और जो यूएलएट ट्रांजैक्शन है यहाँ पे मैं गेट ऑपरेशन कर रहा हूँ। नाउ लेट्स सी दिस थिंग। एक बार ये चेन कोड भी चेक कर लेते हैं हमारा कि चेन कोड में हम क्या कर रहे हैं, कौन से फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। टू सी चेन कोड, जो हमने टेस्ट चेन कोड डिप्लॉय किया था वो मेरा फैब्रिक सैंपल के अंदर, एसेट ट्रांसफर बेसिक्स के अंदर, चेन कोड जावास्क्रिप्ट के अंदर, लिब के अंदर एसेट ट्रांसफर में है। ठीक है, देखो जो मेरा इनिट लेजर है, ये मेरा क्लास है एसेट ट्रांसफर इनिट लेजर, ये मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जितने भी अभी एसेट्स है, एसेट 1 ब्लू 5, ये जितने भी एसेट्स हैं इनको कॉल करेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू राइट दिस एंट्री हियर। ठीक है, यहाँ पे राइट करने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे मैं देख रखते हो, आप देख सकते हैं यहाँ पे पुट स्टेट में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ बेस्ड ऑन दी एसेट जो भी हमने डिफाइन किया। एंड देन सेकंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू डू द गेट ऑपरेशन हियर, गेट ऑल एसेट्स। ओके, गेट स्टेट बाय रेंज। यहाँ पे मैं एम्प्टी दिया है मैंने, जिससे वो जितने भी एसेट्स होंगे पूरा कंप्लीट इटरेशन रन करके, इटरेटर रन करके इट विल थ्रो द आउटपुट। डोंट वरी अबाउट द कोड एज ऑफ नाउ, वी गोना डू दिस थिंग्स अगेन फॉर आवर एक्चुअल chain code. This is just for our testing as of now. Okay, now let's go to the register user. और एक चीज, मैंने मेरे साइड से इस सेम जो अभी मेरा नेटवर्क चालू है उस पर ऑलरेडी इनिट लेजर को मैंने कॉल कर लिया है। ओके, तो व्हाट आई विल डू, आई विल कमिट दिस एज ऑफ नाउ, नहीं तो मुझे एरर आएगा, सेम एंट्रीज इट विल ट्राई टू रीराइट, तो वो मेरा पूरा कोड रन नहीं होगा दिस स्क्रिप्ट। So I will simply try to script the init part, but I'll try to get the data from the ledger. Okay, now let's me try to run this. तो यहाँ पे मैं दो चीजें कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं इसी स्क्रिप्ट में एक मेरा यूजर भी बना रहा हूँ। सो लेट मी डू वन मोर थिंग फॉर यू गाइस टू सी द ऑल द थिंग प्रॉपर्ली। मैंने यहाँ पे राधा बनाया ना, सो वी विल चेंज द नेम फॉर क्रेडेंशियल्स, रामा बनाते हैं अभी। ठीक है, रामा नाम से मेरा क्रेडेंशियल क्रिएट होगा। ठीक है, तो नाउ लेट्स रजिस्टर माय यूजर .js and let's see. Yes, credentials बना दिया, perfect, perfect. Yeah, you can see मेरा यहाँ पे rama.id credentials बन चुके हैं, right? And then sp private key, and मेरी यहाँ पे देख सकते हैं लेजर से जो डेटा मैं बोल रहा था आपको, जो भी हमने यहाँ पे डिफाइन किया है हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, चेन कोड में, वो सारे डिटेल्स यहाँ पे आ गए हैं जो भी अरे था। सो या दिस इज हाउ इट वर्क्स। परफेक्ट, गॉट इट? I think you got it. So this is all about interacting with the chain code. If you have any issues or any errors while doing these things, feel free to connect with me. You can comment on this same video, or in description you can find the link for the meeting. There you can connect with the 15 minutes quick chat sort of thing. And yeah, here we go. So next video में हम देखेंगे इसका actual smart contract logic. So I just want to show you the exact end picture. Now we used to follow the same repetitive step. अभी हम सेम रिपीटेशन फॉलो करेंगे, नेटवर्क को डाउन करना, वापस नेटवर्क को अप करना, हमारे चेन कोड को लिखना और उधर वापस चेन कोड को डिप्लॉय करके उसको इस तरीके से एक्सेस करना। सो थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद। सो अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली है, राइटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिप्लॉइंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड यूजिंग दी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग स्क्रिप्ट। तो अभी तक हमने नोड एसडीके फुल फ्लैश में यूज नहीं किया, हमने बस एक बार क्रेडेंशियल्स जनरेट किए थे, उसमें से ही पिछले वीडियो में यूजिंग सम सबमिट एंड यूएलएट ट्रांजेक्शन हमने गेट किया था। आई थिंक गेट ऑल एसेट्स को हमने किया। ठीक है, सो इन टुडेज वीडियो वी गोना राइट अवर एक्चुअल चेन कोड, जिसके अंदर हमारा ईएचआर का जो भी आइडियल यूज केस है, जैसे एडिंग हॉस्पिटल्स इनटू नेटवर्क, एडिंग डॉक्टर्स इनटू द नेटवर्क, एडिंग इंश्योरेंस इनटू द नेटवर्क, और फिर जो भी हमारा बिजनेस लॉजिक है वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं।
ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने अभी तक गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज एक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर कीजिए एंड फील फ्री टू कमेंट फॉर योर एनी क्वेश्चंस एंड एनी क्वेरीज। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, let's get started with our video. तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम समझते हैं हमारा जो बेस रिपॉजिटरी है उसके अंदर हमारा रीडमी फाइल है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्टेप्स डाल के रखे, विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आर सेटिंग अप आर नेटवर्क, राइट। जो हमने पहले वीडियोस में स्टेप्स फॉलो किए थे वो थे टू स्टार्ट अप और टेस्ट नेटवर्क। देन हमने ये वाला भी कमांड स्टार्ट किया था कि अगर हमें सी ए सर्वर जो हमारा सी ए है एंड देन उसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के थ्रू हमें माई चैनल भी क्रिएट करना होगा तो वी हैव टू फॉलो दिस कमांड। ये हम नेटवर्क ऑफ क्रिएट चैनल हाइफन सी हाइफन एस काउच टीपी, ठीक है। एज अ काउच टीपी हम डेटाबेस चूज करेंगे तो ये वाला कमांड रन करना पड़ेगा हमें। तो इससे माई डिफॉल्ट चैनल माई चैनल भी क्रिएट हो जाएगा हमारे नेटवर्क में। एंड देन है हमारा ये डिप्लॉय करने के स्क्रिप्ट। तो सबसे पहले लेट्स ट्राई कि हम हमारा चैनल अप करेंगे। बट हाँ, ये तो है कि अगर हमारा नेटवर्क जब हमें अप करना होगा तब। बट बिफोर दिस व्हाट विल डू, अंडरस्टैंड द फोल्डर स्ट्रक्चर कि हमें चेन कोड कहाँ पे लिखना है। हमारा मेन फोकस है आज का चेन कोड राइटिंग, ठीक है। तो फैब्रिक सैंपल्स के अंदर जा रहे हैं हम, एसेट ट्रांसफर के अंदर गए। एसेट ट्रांसफर के अंदर चेन कोड जावास्क्रिप्ट दिख रहा है मुझे। एंड देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिब दिख रहा है, राइट। तो इसके अंदर मैंने क्या किया है, ई एच आर चेन कोड करके एक फाइल बनाई है, ठीक है। ई एच आर चेन कोड डॉट जी एस। तो अभी इस फाइल में हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा है चेन कोड का बेस फाइल, दिस इज आवर बेस चेन कोड। जो भी पूरा बिजनेस लॉजिक रहेगा चेन कोड का हम इसमें लिख रहे हैं। तो ई एच आर चेन कोड में हो क्या रहा है, लेट्स सी। तो सबसे पहले है हमारे इतने पूरे एक्टर्स है हमारे यूज केस में। गवर्नमेंट है, हॉस्पिटल है। गवर्नमेंट इज अ नेटवर्क ओनर। हॉस्पिटल क्या है, जो नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, राइट। देन प्रैक्टिसिंग फिजिशियंस है और वी कैन कॉल दिस डॉक्टर, उसका भी रीड राइट ऑपरेशन होगा। बट ये कौन कौन से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, स्पेसिफिक डेटा पे रीड राइट ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे पेशेंट डेटा को विद रिस्पेक्ट टू हॉस्पिटल्स, उसी डेटा को क्या कर सकता है डॉक्टर एक्सेस कर सकता है, रीड राइट कर सकता है। देन डायग्नोस्टिक सेंटर्स है हमारे यूज केस में, जो कि पेशेंट विथ रिस्पेक्ट टू जो पेशेंट रिकॉर्ड जो अपलोड करने रहेंगे वही डायग्नोस्टिक सेंटर्स रीड राइट कर सकता है। देन वी हैव फार्मासीज, pharmas, which can upload or which can see read the prescriptions of doctor based on the pharma, and they can update their medicine records as well, ठीक है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा रिसर्चर्स या आर एंड डी डिपार्टमेंट, जो कि पूरा डेटा कलेक्ट करेगा। ओवरऑल प्लेटफॉर्म, पेशेंट डेटा हो गया, डिसीज डेटा हो गया, हॉस्पिटल का डेटा हो गया, जो भी नया मेडिसिनल डेटा दे वांट टू कलेक्ट एंड डू सम रिसर्च, तो वो सारी चीजें कौन, रिसर्चर्स हमारा कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिया है कि भाई दे कैन रीड द डेटा ऑफ हॉस्पिटल कनेक्टेड एंड देन पेशेंट बेस्ड ऑन द कंसेंट, और ये कंसेंट मैकेनिज्म होगा। देन यहाँ पे आता है हमारा इंश्योरेंस कंपनी, जो कि क्लेम, जो भी पेशेंट क्लेम रेज करेगा उनको रीड कर सकता है, वैलिडेट कर सकता है, एंड देन दे कैन राइट द अप्रूवल वाला पार्ट, सो दे कैन राइट द क्लेम एज वेल। ना द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेशेंट, जो कि हमारा एंड यूजर रहेगा। तो एंड यूजर कैन डू टू टाइप ऑफ ऑपरेशन, रीड राइट ऑपरेट ऑफ कोर्स। सो जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं हमारे चैनल पे बाय डॉक्टर्स, बाय डायग्नोस्टिक सेंटर्स, जो भी डेटा कलेक्ट हो रहा है फॉर दैट इंडिविजुअल पेशेंट, तो वो अपने ऐप में, अपने डैशबोर्ड में रीड कर सकता है पेशेंट, राइट। और उसके बाद में जो भी डेटा मान के चलो, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने कुछ टेस्ट परफॉर्म की, ऐसे जगह पे उसने टेस्ट की जहाँ पे हमारा पोर्टल या प्लेटफॉर्म सपोर्ट नहीं करता है, बट अभी कलेक्टिवली ये एक हब बन गया उसके मेडिकल रिकॉर्ड के लिए, तो दे वांट टू अपलोड सम रिकॉर्ड ओवर देयर। तो सिंपली वो जो भी उसने नॉर्मल टेस्ट किया उसका फाइल वो यहाँ पे अपलोड कर सकता है। तो इसके पर्सनल यूज के लिए भी काम में आ सकता है ये ऐप। तो दैट्स व्हाई पेशेंट हैज बोथ द एक्सेस, रीड एंड राइट, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अपना जो डेटा स्ट्रक्चर रहेगा फॉर स्टोरिंग पेशेंट वो किस तरीके से रहेगा। डेटा स्ट्रक्चर कैसे रहेगा हमारा, आप देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंट आईडी। यहाँ पे हमने दिया है पेशेंट आईडी रहेगा, उसको उसका नेम रहेगा, जेनरिक डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, देन रिकॉर्ड। अभी ये उस पर्टिकुलर पेशेंट पे कितने रिकॉर्ड अपलोड हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक बात समझनी होगी कि जब ब्लॉकचेन में हम डेटा अपलोड करते हैं
तो पूरा की वैल्यू पेयर में डेटा अपलोड होगा और पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रहता है, ठीक है। सो यू कैन दिस विल ट्रीट एज वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एक रिकॉर्ड ट्रीट होगा मेरे लेजर में ये, ठीक है। इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की आईडी रहेगी, ये प्राइमरी आईडी। अब इसके अंदर मैं कितने सब रिकॉर्ड्स ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये हो गया, हमने रिकॉर्ड्स का अरे बना के रखा है कि इस पेशेंट्स के कितने रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। पहला रिकॉर्ड आईडी ये, जो कि अभी देखो कैसा होता है ना कि अगर मैं पेशेंट हूँ तो मैं सिर्फ एक बार तो बीमार नहीं पड़ूंगा, राइट। मेरे मल्टीपल टाइम्स रहते हैं कि मैं 5 साल में कितनी बार मल्टी एन नंबर ऑफ टाइम में विजिट कर सकता हूँ, या मैंने 10 बार विजिट किया है इन इन 3 इयर्स। तो यहाँ पे 10 रिकॉर्ड मेंटेन होंगे कि कौन से उसका, आपका रिकॉर्ड आईडी क्या है, आपका डॉक्टर आईडी क्या है। ये रिकॉर्ड आईडी रहेगा, आपने कौन से डॉक्टर से कंसल्ट किया, डायग्नोसिस क्या था आपको, आपको क्या प्रिस्क्रिप्शन मिला, टाइम स्टैम्प क्या है, एंड मोर मोर डिटेल्स। यहाँ पे फिर साथ में हो सकता है कि कोई डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट हो तो डॉक्यूमेंट का हैश अपलोड होगा यहाँ पे, डॉक्यूमेंट आईडी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बनेगा रिकॉर्ड आईडी का रिकॉर्ड। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे और एक चीज है कि अभी ये पेशेंट है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सेस कंट्रोल मैनेज करना पड़ेगा ना, कि ये पेशेंट का डेटा सिर्फ जो डॉक्टर है उसका, उसको दिखे और उस पेशेंट को दिखे, इसके अलावा वो पेशेंट डेटा कोई भी एक्सेस नहीं कर सके। तो वी हैव एडेड हियर ऑथराइज्ड डॉक्टर्स। तो हम यहाँ पे ऑथराइज्ड डॉक्टर्स का क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक अरे मेंटेन करेंगे कि कौन कौन से डॉक्टर्स की आईडी, मतलब कौन कौन से डॉक्टर्स आपका डेटा एक्सेस कर सकते हैं, किसने जनरेट किया है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम जब भी पेशेंट ऑनबोर्ड हो रहा है या पेशेंट किसी डॉक्टर के पास में जा रहा है, तो उसको अपना एक रिक्वेस्ट भेजेगा डॉक्टर बेस्ड ऑन द पेशेंट आईडी कि भाई आप मुझे कंसेंट दो, यू आर माई वैलिड पेशेंट, मैं आपको ट्रीट कर रहा हूँ, तो आप मेरा कंसेंट लोगे। तो वो अपने ऐप में या वेबसाइट पे उसको अप्रूव करेगा, एंड देन जैसे वो अप्रूव करेगा, अब उसकी जो आईडी है वो ऐड हो जाएगी उसके वॉलेट में, ठीक है, मतलब उसके रिकॉर्ड में। तो देन डॉक्टर कैन क्रिएट द रिकॉर्ड एंड देन अपडेट उसके जो भी रिकॉर्ड डिटेल्स है, क्योंकि ये तो टेक्निकल डिटेल्स है ना, ये सारी चीजें पेशेंट अपडेट नहीं करेगा, ये सारी चीजें डॉक्टर अपडेट करेगा। तो मोर और लेस डॉक्टर इनपुट्स देगा, हमारा बैकएंड पूरा उसको हैंडल करेगा, ठीक है। सो दिस इज दी हाउ स्ट्रक्चर विल वर्क। नाउ लेट्स सी कि हमारे पास में थोड़ा सा मैं इसको टर्मिनल को ये कर देता हूँ। वी हैव मल्टीपल थिंग्स। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ऑनबोर्डिंग एनी न्यू एंटिटीज इन आवर नेटवर्क। सॉरी। तो देखो हमारे पास में हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हमने क्या बोला है कि वो नेटवर्क ओनर जैसे है। नेटवर्क ओनर रहेगा गवर्नमेंट। अभी मैं हॉस्पिटल को ट्रीट कर रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, ठीक है। मैंने जैसे बताया था स्टार्टिंग में कि हमारे पास में 2 ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे, ठीक है। 2 ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक org1 एंड org2, एंड देन इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने पीयर रहेंगे, पीयर जीरो ऑफ org1 एंड पीयर जीरो ऑफ org2। ये हम मल्टीपल भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपका अपना नेटवर्क आर्किटेक्चर किस तरीके से डिफाइन करता है। तो अभी हम बेसिक नेटवर्क के साथ में जाते हैं, क्योंकि ये अपना पीओसी प्रोजेक्ट सॉर्ट ऑफ थिंग है, ठीक है। तो मैं बस आपको एक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ कि जब आप इसको प्रोडक्शन ग्रेड करोगे या जब हम एक्चुअल प्रोडक्शन ग्रेड में जाते हैं तो तब कैसे वर्क करता है और अब कैसे वर्क कर रहा है। तो जस्ट आई एम गिविंग अंडरस्टैंडिंग कि हॉस्पिटल जो है हम ऑर्गेनाइजेशन को ट्रीट कर रहे हैं, जो हमारा टेक्निकल कंपोनेंट भी है इस नेटवर्क पार्ट का, ओके। सो अभी मेरे पास में ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ऑलरेडी ऑनबोर्डेड है, ठीक है। क्योंकि हम उसको बैकएंड में ऐड करते हैं, बट हम जब हमारे डॉकर स्क्रिप्ट से उसको रन करेंगे तो मेरे 2 ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी ऑनबोर्ड हो जाते हैं, माई चैनल भी नेटवर्क क्रिएट बन जाता है और उसमें ऑनबोर्ड हो जाता है। सो द अजम्पशन इज हॉस्पिटल इज ऑलरेडी ऑनबोर्डेड, ओके। तो हम इसको अभी हमें उसे कुछ डेटा मेंटेन करना पड़ेगा। तो डेटा कैसे मेंटेन करेंगे, हमने पिछले वीडियो में देखा था जस्ट बिफोर दिस वीडियो कि वी आर क्रिएटिंग द क्रेडेंशियल्स। हमने एडमिन सर्टिफिकेट्स बनाए थे और एक आई थिंक कुछ पेशेंट सर्टिफिकेट्स भी बनाया था, या फिर कुछ यूजर का सर्टिफिकेट भी बनाया था, ठीक है, जिससे हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर सके फ्रॉम आर लेजर, ओके। तो सिमिलरली जब हम सर्टिफिकेट बनाएंगे तो सर्टिफिकेट के इसमें हम अलग अलग एक्सेस लेवल का ऑथेंटिकेशन देंगे, ठीक है। कि जब एडमिन का सर्टिफिकेट बनता है तो हॉस्पिटल वन का अलग से बनेगा, देन इंश्योरेंस के ऑर्गेनाइजेशन का अलग से सर्टिफिकेट बनेगा, मेरे डॉक्टर का सर्टिफिकेट अलग से बनेगा, मेरे पेशेंट्स का सर्टिफिकेट अलग से बनेगा। तो जब मैं सर्टिफिकेट बनाता हूँ सो आई विल सेग्रीगेट कि ये कौन सा यूजर है। तो नाउ मैं थोड़ा सा आपको अभी दिखा देता हूँ कि सर्टिफिकेट हम कैसे बनाएंगे एंड देन वो कैसे वर्क करता है। तो आपको और एक फोल्डर दिखेगा सर्वर नोड एसडीके।
सर्वर नोड एसडीके के अंदर हमने हमारे पास में दो फाइल है, रजिस्टर एडमिन डॉट जेएस एंड रजिस्टर यूजर डॉट जेएस। तो अगर आप रजिस्टर एडमिन डॉट जेएस देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो एडमिन है, ये ऑर्ग वन के साथ में कनेक्टेड है। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, बट ये देखो आप ऑर्ग वन के एडमिन के लिए हम बना रहे हैं, सिमिलरली हम ऑर्ग टू के एडमिन के लिए भी बना सकते हैं। और हम ऐसा कर सकते हैं, जो ऑर्ग वन है वो मेरा हॉस्पिटल ट्रीट हो रहा है, और जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन टू है वो मेरा इंश्योरेंस कंपनी ट्रीट हो रहा है, क्योंकि इंश्योरेंस इज लाइक मोर ऑपरेशनल और फाइनेंशियल एंटिटी, और हॉस्पिटल मेरा मोर मेडिकल इंडस्ट्री, राइट। तो जितने भी डायग्नोस्टिक सेंटर और डॉक्टर्स, फार्मा, ये जो आता है वो हम ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल के अंदर ट्रीट करेंगे, विच इज ऑर्गेनाइजेशन वन। और जितने भी मेरे ऑपरेशनल चीजें हैं, जैसे रिसर्चर और ये इंश्योरेंस कंपनी, उनको हम ऑर्ग टू का पार्ट ट्रीट करेंगे अपने यूज केस में, ठीक है। तो हमें स्क्रिप्ट्स भी अपडेट करने पड़ेंगे। सो चलो वो एक चीज कर लेते हैं, दैट्स मच मच बेटर। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। तो हमें क्या चाहिए, हमें दो स्क्रिप्ट चाहिए, जैसे हमने बोला दो ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे, ऑर्ग वन और ऑर्ग टू, तो दोनों के अपने अपने एडमिन होने चाहिए, ठीक है। तो ऑर्ग वन का एडमिन रहेगा हॉस्पिटल, और ऑर्ग टू का एडमिन रहेगा लेट्स से इंश्योरेंस कंपनी, या फिर लेट्स कॉल ऑर्ग वन एडमिन एंड ऑर्ग टू एडमिन, दैट इज इजी इजी पीजी। तो या सो रजिस्टर एडमिन ऑफ ऑर्ग टू, ठीक है। यहाँ पे रजिस्टर ऑर्ग टू एडमिन कर देते हैं, टू ऑर्ग टू एडमिन, एंड देन हियर बोलेंगे रजिस्टर ऑर्ग वन एडमिन। ऑर्ग वन मतलब हॉस्पिटल, ठीक है, ऑर्ग वन एडमिन। तो अभी हमें क्या करना है, लेट्स ट्राई टू, देखो सबसे पहले हम करेंगे ग्लोबल सर्च यहाँ पे, कि ऑर्ग वन कितने कितने हैं हमारे पास में, लाइक ऑर्ग वन को सर्च करेंगे हम यहाँ पे। मल्टीपल इटरेशन से ऑर्ग वन के हमारे, एक बार पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि स्क्रिप्ट में क्या हो रहा है। सबसे पहले हम कनेक्ट करते हैं हमारे सर्च से, ठीक है, जेसॉन कनेक्शन, जेसॉन से हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को करेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज वन से, ऑर्ग वन से। देन उनके सर्च के थ्रू हम क्या करेंगे, उनका सी इज नथिंग बट द सर्टिफिकेट ऑथोरिटी। सर्टिफिकेट ऑथोरिटी हम लेंगे यहाँ से, ठीक है। एंड देन उसके बाद में हम क्या करते हैं, एक पाथ डिफाइन करते हैं, और वहाँ पे हमारा यूजिंग फैब्रिक सी सर्विस, देख सकते हैं आप, यूजिंग ट्रस्ट, जो भी सी सर्ट पास करके प्रॉपर एक क्रेडेंशियल जनरेट करते हैं हम, सारे वेरिएबल जनरेट कर दिए। एंड देन यहाँ पे हम X509 टाइप का सर्टिफिकेट बनाता है विथ एमएसपी यूजिंग ऑर्गन एमएसपी। ऑर्गन एमएसपी देके यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो प्रोसेस है पूरा सर्टिफिकेट बनाने का प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सर्टिफिकेट बना दिया, और यूजर नेम क्या दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, एडमिन एंड एडमिन पीडब्ल्यू। तो यहाँ पे मैं दूंगा अभी इंस्टेड ऑफ एडमिन, एडमिन टू का है तो ये देंगे एडमिन टू दे देंगे यहाँ पे, और पासवर्ड वी कैन डू पीडब्ल्यू, ठीक है। एडमिन टू दिया मैंने यहाँ पे, और जस्ट वी नीड टू रीनेम वेर एवर वी देयर इज ऑर्ग वन, वी विल चेंज विथ ऑर्ग टू। ऑर्ग टू कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी कुछ देखते हैं कि और भी रिपीटेशंस है। हाँ, और भी एक रिपीटेशन दिखा हमें, विच इज दिस वन, एक ही है, तो हम सीधा यहाँ पे ऑर्ग वन एमएसपी के जगह पे ऑर्ग टू एमएसपी कर देंगे। बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ऑर्ग टू मतलब ऑपरेशनल चीज है, ऑर्ग वन मतलब मेरा हॉस्पिटल, ठीक है। सो या आई थिंक इट्स डन। और हम यहाँ पे सक्सेसफुल में भी देंगे एनरोल एडमिन, एडमिन टू, राइट, या एडमिन टू हमने एनरोल कर लिया सही से। एडमिन टू इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। हाँ, चेक करेंगे, अगर एडमिन टू ऑलरेडी है तो उसको वापस नहीं करेंगे, ठीक है। या सिमिलरली ऑर्ग ऑर्ग वन में जब जाते हैं तो एडमिन है सिंपल, तो एडमिन के जगह पे एडमिन वन कर देता है, एडमिन वन रहेगा ये। एंड देन हियर वी कैन कॉल एडमिन टू, अब सॉरी इट्स वन ओनली। पासवर्ड नहीं भी चेंज किया तो चलेगा, इट्स फाइन। और वी कैन कॉल ऑर्गो एंड एडमिन, वट एवर नेमिंग कन्वेंशन यू वांट टू फॉलो, आप कोई भी नेमिंग कन्वेंशन फॉलो कर सकते हैं, बट दिस इज फाइन, ओके। सो ये हमारी स्क्रिप्ट बन गई है टू रजिस्टर एडमिन, ओके। अभी आपको मैं और एक स्क्रिप्ट दिखाता हूँ, जो हमने ये वाली स्क्रिप्ट पिछले इसमें रन की थी। हमने क्या किया था, हमने पहले रजिस्टर कर दिया था यूजर,
ठीक है। देन यूजिंग रामा यूजर हम हमारे चेन कोड, राइट, हमारे टेस्ट 01 चेन कोड को इनिट लेजर कॉल कर रहे थे, एंड देन उसके बाद में गेट ऑल एसेट्स को कॉल कर रहे थे, ठीक है, जो भी मतलब लेजर पे एंट्रीज बनेगी डेटा, तो उसको ले रहे थे। सो सिमिलरली हमारे यूज केस में हम क्या करेंगे कि जब हमें यूजर ऑनबोर्ड करने होंगे, लेट्स से ऐड डॉक्टर इन द इकोसिस्टम, ठीक है, ऐड डॉक्टर हो गया, ऐड पेशेंट हो गया, ऐड इंश्योरेंस एजेंट हो गया, फार्मा कंपनी हो गई, वॉट एवर। तो हमें उनके लिए सर्टिफिकेट्स बनाने पड़ेंगे, करेक्ट। तो हम क्या करेगा, एडमिन उनके लिए सर्टिफिकेट्स बनाएंगा यहाँ से। ये जो स्क्रिप्ट मतलब जो यूजर रहेगा वो एडमिन रहेगा, जो उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को यूज रन करेगा, एंड देन उनके लिए आइडेंटिटी बनेगी, और साथ ही में जो हमारे लेजर में उनके लिए एक एंट्री भी बनेगी बेस्ड ऑन देयर आइडेंटिटी, ताकि वो हम सिंक में रह सके। क्योंकि जो हमारे जो सर्टिफिकेट्स बनते हैं वो हमारे इधर वॉलेट के डीबी में बनते हैं, वॉलेट फोल्डर में बनते हैं, राइट। बट हमें फिर सिंक में नहीं पता रहेगा, मतलब एक्चुअल जो हमारा लेजर है उसमें कुछ डेटा नहीं रहेगा विद रिस्पेक्ट टू दैट यूजर जिसके पास में क्रेडेंशियल है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दोनों टाइम पे उसकी एंट्रीज बना के रखेंगे, ठीक है। सो वी विल फॉलो बोथ द थिंग्स ओवर हियर। Now let's get back to our chain code. चेन कोड में देखो, आप थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, इट्स नॉट दैट मच स्ट्रेट फॉरवर्ड बट प्रीटी इजी एज वेल। देखो अभी मैं यहाँ पे ना दो चीजें कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको अभी क्रेडेंशियल दिखाया है, तो क्रेडेंशियल में आप देख सकते हैं कि हम डिफाइन करते हैं कि वो org1 का है या org2 का है, राइट। तो बेस्ड ऑन दिस org1 org2 एंड देन रजिस्टर यूजर, जो रजिस्टर यूजर भी करते हैं हम। तो जब मैं यूजर भी रजिस्टर करता हूँ तो यूजर में मैं और मेटा डेटा डालता हूँ अदर देन org1 org2। यहाँ पे org1 org2 तो मैं डालूंगा एमएसपी, बट साथ में मैं मेटा डेटा भी डालता हूँ कि वो कौन से डिपार्टमेंट का है, लाइक से एफिलिएशन org1 डिपार्टमेंट 1 डाला मैंने, देन एनरोलमेंट आईडी क्या है उसकी, रामा है, क्लाइंट क्या है उसका, रोल क्या है, रोल इज क्लाइंट, राइट। देन उसके पास में और भी एट्रीब्यूट्स हम डाल सकते हैं कि नेम क्या है उसका, राइट, रोल एंड देन वैल्यू इन्वेस्टर। अगेन वी कैन डिफाइन मल्टीपल यूजर आईडी क्या है उसकी, लाइक यूजर आईडी एंड नेम एज अ वैल्यू एज रामा। सो हम इस तरीके से मल्टीपल यू नो एट्रीब्यूट्स, नेम वैल्यू पेयर एट्रीब्यूट बेसिस पे उसमें डिटेलिंग डाल सकते हैं एज अ मेटा डेटा फॉर यूजर आइडेंटिफिकेशन। तो हमारे यूज केस में हम डालेंगे हॉस्पिटल्स के लिए अलग, पेशेंट्स के लिए अलग, इंश्योरेंस कंपनी के लिए अलग। तो विल क्रिएट मल्टीपल क्रेडेंशियल्स फॉर दिस, ओके। बट नाउ लेट मी गिव यू द अंडरस्टैंडिंग, अभी आपको चेन कोड थोड़ा अच्छे से समझेगा। जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा है ऑनबोर्ड डॉक्टर। अभी ऑनबोर्ड डॉक्टर कौन करेगा, ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल या एडमिन के द्वारा एडमिन के द्वारा ये फंक्शन ट्रिगर होगा। सो हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि जो कॉल कर रहा है, यहाँ पे तो हमने सिंपल लिया है गेट कॉलर एट्रीब्यूट्स, हमने कॉलर के एट्रीब्यूट एक्सट्रैक्ट किए जो मैंने अभी जस्ट क्रेडेंशियल में दिखाया था। वहां से हम उसका रोल एक्सट्रैक्ट किया और यूयू आईडी एक्सट्रैक्ट किया, यूयू आईडी को एलएस दिया मैंने कॉलर आईडी, ठीक है। फिर उसका यूयू आईडी एक्सट्रैक्ट करने के बाद में मैं सबसे पहले और एक चीज एक्सट्रैक्ट करूंगा उसकी, कि उसका वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है, वो ऑर्ग 1 से बिलोंग करता है। अगर ऑर्ग 1 से बिलोंग नहीं करता है तो विल से ऑन ओनली हॉस्पिटल कैन ओनली ऑनबोर्ड डॉक्टर, ओनली हॉस्पिटल कैन ऑनबोर्ड डॉक्टर, ओके, ठीक है। तो अगर यहाँ पे फिर वो एरर थ्रो हो जाएगा और वो चेन उस पर्टिकुलर फंक्शन से बाहर आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर हम org1 से ही कॉल कर रहे हैं सही से, सो हम आगे जाएंगे, उसकी डॉक्टर आईडी लेंगे, मतलब स्टेट चेक करेंगे कि भाई ये आईडी जो है डॉक्टर आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर रजिस्टर्ड है तो हम बोल देंगे कि दिस डॉक्टर आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड बाय दिस कॉलर आईडी इज नथिंग बट दी हॉस्पिटल आईडी। जो भी वो कॉलर आईडी कहाँ से आएंगे, मेरे क्रेडेंशियल से आएंगे, एग्जैक्टली, जो हमने ऑलरेडी डिफाइन करके रखेंगे हम। और फिर यहाँ पे हमने क्या दिखा है कि रिकॉर्ड आईडी जनरेटर, रिकॉर्ड आईडी जनरेट मतलब अभी मुझे एक रिकॉर्ड आईडी जनरेट, मतलब ये देखो ये मेरा रिकॉर्ड है, तो मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड आईडी जनरेट करनी पड़ेगी। तो वो रिकॉर्ड आईडी हम कैसे ले रहे हैं, मैं पास कर रहा हूँ थोड़ा, यहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन आईडी लूंगा, गेट ट्रांजेक्शन आईडी, एंड देन गेट ट्रांजेक्शन आईडी को रिकॉर्ड हाइफन ट्रांजेक्शन आईडी करके दूंगा, अपेंड करके, एंड देन वहाँ पे वो एज अ रिकॉर्ड आईडी पास होंगे यहाँ पे। देन यहाँ पे मैं डॉक्टर आईडी लूंगा, हॉस्पिटल की आईडी लूंगा एज अ कॉलर आईडी, क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ पे डॉक्टर को ऑनबोर्ड कर रहा हूँ तो मुझे हॉस्पिटल आईडी लगेगी, नेम, देन हॉस्पिटल नेम क्या है, सिटी क्या है उसकी, एंड टाइम स्टैम्प। सो दिस इज अ बेसिक डिटेल्स। तो ये जो रिकॉर्ड रहेगा मेरा, ये रिकॉर्ड रहेगा मेरे हॉस्पिटल, सॉरी मेरे डॉक्टर के
आइडेंटिटी का रिकॉर्ड रहेगा ये, ठीक है। जैसे मैं डॉक्टर को ऑनबोर्ड करता हूँ तो ये चीज फंक्शन होगी। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम कब कॉल करेंगे, जब मैं उस डॉक्टर की आइडेंटिटी बनाऊंगा फ्रॉम मेरे क्रेडेंशियल से। इस चेन कोड को मैं जब क्रेडेंशियल बनाऊंगा ना, तभी उस टाइम पे ही कॉल कर लूंगा, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। फिर सिमिलरली ऑन द अदर वे, ऑनबोर्ड इश्यूअर इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस के लिए कैसे किया है मैंने, कि जैसे मैं डॉक्टर के लिए ऑर्ग वन चेक कर रहा था, तो यहाँ पे मैं ऑर्ग टू चेक करूंगा कि अगर ऑर्ग टू नहीं है तो भाई आप नहीं कर सकते, अगर है तो गुड। तो यहाँ पे अच्छा, तो थोड़ा सा हमने फंक्शन रियूज किया है, तो डॉक्टर वापस आ गया इधर, बट या इट्स नॉट डॉक्टर, इट्स इंश्योरेंस, ठीक है। यहाँ पे इंश्योरेंस आ जाएगा, यहाँ पे भी इंश्योरेंस आ जाएगा, यहाँ पे इंश्योरेंस आ जाएगा, और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डॉक्टर आईडी हम लेंगे एजेंट आईडी। एजेंट आईडी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि एजेंट आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट और नॉट। और आई थिंक यहाँ सिमिलरली सिमिलर मैनर में अभी इंश्योरेंस पर्सन है, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, इंस्टेड ऑफ डॉक्टर आईडी, नॉट डॉक्टर, इंस्टेड ऑफ डॉक्टर आईडी विल गिव हियर एजेंट आईडी। परफेक्ट। और हॉस्पिटल आईडी के जगह पे आ जाएगा मेरा इंश्योरेंस आईडी, क्योंकि इंश्योरेंस ओनर जो रहेगा या इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उनको क्रिएट करेगा, ठीक है। फिर हम नेम लेंगे, और इंस्टेड ऑफ हॉस्पिटल नेम विल से इंश्योरेंस नेम। आई थिंक मैं ऑलरेडी इंश्योरेंस नेम का एट्रीब्यूट ले रहा हूँ, या कंपनी नेम, इंश्योरेंस कंपनी ले लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी, देन नेम, नेम हम ले रहे हैं, एंड देन सिटी, कि कौन से सिटी में ये वर्क करता है एजेंट, एजेंट आईडी। परफेक्ट। तो ये मेरा रिकॉर्ड रहेगा। अभी यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डॉक्टर आईडी, यहाँ पे मेरा एजेंट आईडी जाना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे, मैं देखो ये एक बात समझने वाली है ऑन द बोथ द कोड, ऊपर डॉक्टर वाला भी और ये एजेंट वाला भी, कि यहाँ पे जब मैं प्राइमरी आईडी दे रहा हूँ, तो ये जो रिकॉर्ड क्रिएट होगा ये इस आईडी के अगेंस्ट क्रिएट होगा। तो जब मैं सर्च क्वेरी परफॉर्म करूंगा, तो मुझे इस एजेंट आईडी के अगेंस्ट उसको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ कि जब मैं चेक कर रहा हूँ ना, ये पहले वाले फंक्शन में, कि मैं इसको एजेंट आईडी के बेसिस पे चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी ये एजेंट आईडी रहेगा। मैं एजेंट आईडी चेक कर रहा हूँ कि एजेंट आईडी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। एजेंट आईडी अगर एग्जिस्ट करती है तो विल से कि हाँ, दिस इंश्योरेंस एजेंट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। अगर नहीं करता है तो विल क्रिएट इट। सो प्लीज रिमेंबर दैट, हम रिकॉर्ड आईडी नहीं ले रहे यहाँ पे प्राइमरी, वो तो अपने रिकॉर्ड को यूनिक बनाने के लिए, बट या स्टिल वी आर यूजिंग एजेंट आईडी वो ही। देन यहाँ पे हमारा दूसरा फंक्शन आता है। सिमिलरली हमने जो दिस फंक्शन, या ये हो गया। अभी मेरे पास में और एक फंक्शन है विच इज ग्रांट एक्सेस। अभी ग्रांट एक्सेस मतलब, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, विथ रिस्पेक्ट टू आवर फ्लो, हमारा फ्लो कुछ इस तरीके से है। पहले पेशेंट डॉक्टर के पास में जाएगा, देन डॉक्टर पेशेंट के आईडी को, पेशेंट के आईडी लेगा, देन पेशेंट के आईडी पे एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई प्लीज ग्रांट मी एक्सेस। अगर ऑलरेडी वो नोन डॉक्टर है तो अपनी प्रोसीजर फॉलो करेगा, अपना नया रिकॉर्ड अपडेट करेगा। बट अगर ये फर्स्ट टाइम नया पेशेंट आया है और वो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है किसी स्पेसिफिक डॉक्टर को, तो वो अपने पहले कंसेंट मैकेनिज्म शेयर होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक्सेस कंट्रोल, स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल दे रहे हैं बेस्ड ऑन कंसेंट मैकेनिज्म, कि पहले अपना क्या करेगा, डॉक्टर रिक्वेस्ट करेगा पेशेंट को कि भाई आप मुझे अप्रूवल दो कि आपके रिकॉर्ड्स को मैं अपडेट कर सकूं। तो ग्रांट एक्सेस उस टाइम पे कॉल होगा। यहाँ पे पेशेंट आईडी ले रहे हैं हम, एंड देन डॉक्टर आईडी। ओके, कॉलर कौन है यहाँ पे हमारे यूज केस में, कॉलर रहेगा मेरा इफ रोल इज नॉट इक्वल टू पेशेंट, ओनली पेशेंट, या कॉलर जो है मेरा वो पेशेंट है कॉलर। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि पेशेंट आईडी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। अगर एग्जिस्ट करती है तो यस, इट्स अ वैलिड। अगर नहीं करती है तो कॉलर इज नॉट द ओनर ऑफ दिस एसेट, राइट। सिंपली जो पेशेंट है वही कॉल कर सकता है उसको। एंड देन हमने पेशेंट आईडी वैलिडेट कर दी है, एंड वो चेक कर रहे हैं कि वो रिकॉर्ड कितना बड़ा है, एंड देन हमने उससे रिकॉर्ड फेच किया। एंड देन जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में जो रिकॉर्ड है सबसे ऊपर, यहाँ पे जो रिकॉर्ड है, ये स्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हैं कि पहले मुझे पूरा रिकॉर्ड फेच करना पड़ेगा, और उसके बाद में एक अरे है जो ऑथराइज्ड डॉक्टर अरे है, उसके अंदर मैं उस डॉक्टर की आईडी पुश करूंगा। ओके, तो उसी तरीके से हमने किया है। यहाँ पे ग्रांट एक्सेस में क्या कर रहे हैं, हमने पहले उसका एक्सेस लिया है, राइट।
एंड देन इंक्लूड ऑथराइज डॉक्टर डॉट इंक्लूड डॉक्टर आईडी। तो उसमें मैंने डॉक्टर आईडी को पुश कर दिया है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, पेशेंट डॉट ऑथराइज डॉक्टर्स डॉट इंक्लूड्स, अगर यहाँ पे ऑलरेडी वो एक्स आईडी प्रेजेंट है उस अरे में, तो हम बोलेंगे कि यस इट्स ऑलरेडी गिवन, एक्सेस इज ऑलरेडी ऑथराइज्ड। ठीक है, वहाँ पे एरर थ्रो कर देगा, मैसेज थ्रो करेगा, एंड देन हम उसको एप्लीकेशन लेवल पे प्रॉपरली नेविगेट करेंगे। अगर उसको ऐसे एक्सेस नहीं गिवन है, तो व्हाट विल डू, वी विल ऐड द पुश, मतलब उस पर्टिकुलर अरे में मैं उस डॉक्टर आईडी ऐड कर दूंगा। ठीक है, डॉक्टर आईडी सही से दिए मुझे, यस डॉक्टर आईडी हमें यहाँ से मिल जाएगी, जो भी हम पर्टिकुलर एपीआई से, एंड देन हम रिटर्न करेंगे यस एक्सेस ग्रांटेड टू डॉक्टर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझना पड़ेगा। हमने डॉक्टर को ऑनबोर्ड किया, इश्योर को ऑनबोर्ड किया, एंड देन एक्सेस ग्रांट करने की भी बात की यहाँ पे। देन गेट कॉलर एट्रीब्यूट्स, तो ये तो सिंपल गेट कॉलर एट्रीब्यूट्स है जो हम ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर रहे हैं, फंक्शन हेल्पर मेथड है हमारा ये वाला। जैसे कॉन्टेक्स्ट पास करके हम यहाँ पे रोल और यूयूआईडी मिलती है, तो उसका डिटेल्ड जो है हम क्लाइंट आइडेंटिटी यूज करते हैं, कॉन्टेक्ट डॉट क्लाइंट आइडेंटिटी डॉट गेट एट्रीब्यूट्स बेस्ड ऑन देयर एट्रीब्यूट नेम, तो वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर नहीं है तो विल से कि या दिस इज मिसिंग, this is a helper function. Now again this is like a add record, so ये this is for adding new record for patient। ठीक है, ओनली डॉक्टर कैन ऐड दिस रिकॉर्ड। तो पहले तो पेशेंट को ग्रांट करना पड़ेगा, यस अगर ग्रांट होने के बाद में हम क्या करेंगे, अभी डॉक्टर ऐड करेगा। तो ऐड करने का रिकॉर्ड सिंपल है कि रिकॉर्ड आईडी रहेगी, डॉक्टर आईडी, डायग्नोसिस, प्रिस्क्रिप्शन, एंड दैट्स इट। एंड देन उसके बाद में एक्चुअली ये क्या कर रहा है ना, पहले आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो पहले हम चेक कर रहे हैं कि ये पेशेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। यहाँ पे करता है तो ही वो ऐड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। यू कैन सी इन दिस ब्लॉक वी आर चेकिंग, हम पहले चेक कर रहे हैं कि अगर ये एग्जिस्ट करता है पेशेंट तो हम वो ऐड करेंगे। ठीक है, और ये कहाँ पे ऐड कर रहा है, ये रिकॉर्ड डॉट जो पुश कर रहा है। अब वापस मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, हमने पहले ही पूरा हमारा एक ऑब्जेक्ट है, जिस तरीके से हमने ऑथराइज्ड को पुश किया था इस अरे में, उसी तरीके से मेरा रिकॉर्ड्स का भी एक अरे है, राइट। तो सबसे पहले मैंने ये पहला वाला, पहले वो बाय डिफॉल्ट एम्प्टी रहेगा ये अरे, तो फिर मैं रिकॉर्ड्स ऐसे पुश करते जाऊंगा, जितनी बार वो डॉक्टर के पास में विजिट होगा उतनी बार उसकी रिकॉर्ड आईडी बेस्ड ऑन देयर डॉक्टर आईडी, डायग्नोसिस, प्रिस्क्रिप्शन, एंड देन अदर मेटा डेटा वो पुश होते जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैंने क्या है ना, यहाँ पे कोई भी हम रिपोर्ट्स के लिए आईपीएफएस का कुछ भी सीआईडी पास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास में लेट्स अज्यूम कि ऑन द गो फर्स्ट टाइम पे उसके पास में कुछ तो रिपोर्ट नहीं रहेंगे, राइट। वो तो डायग्नोस्टिक सेंटर से आएगा, तो वो डायग्नोसिस सेंटर जो है उसको हम अथॉरिटी देंगे कि आप भाई अपना रिकॉर्ड पुश करो डायरेक्टली, ताकि वो डॉक्टर के पास में जाने की जरूरत ना रखे, डॉक्टर सीधा वहां से रीड कर ले उस पर्टिकुलर पेशेंट से। सो दैट्स माय प्लान। ओके, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। देन गेट ऑल एसेट्स एक फंक्शन है, सिंपल, ये तो काफी सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एडमिन कैन कॉल, मतलब जो भी मेरा डेटा है, मैंने सोचा था कि हम इटरेटर बना के जो भी डेटा है पूरा बेस्ड ऑन दी लेजर, इट्स लाइक अ लेजर रीडिंग वाला है ये। तो ये ग्लोबल है, जो ये कौन काम करेगा, ये हमारे काम में आएगा फॉर डेटा साइंटिस्ट के लिए। ठीक है, मतलब इफ गवर्नमेंट वांट टू रीड और एक हॉस्पिटल वांट टू रीड द डेटा एट हाई लेवल, बट ये फंक्शन को हम अवॉइड भी कर सकते हैं यहाँ पर, इसमें ऑन टॉप ऑफ मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल भी लगा सकते हैं। नाउ वी हैव क्लेम इन्फो। सो ये क्लेम इन्फो फंक्शन भी सिमिलर है। सबसे पहले तो ये अपना क्लेम क्रिएट करेगा, राइट, एंड देन कॉस्ट एस्टिमेट एंड सो एंड सो फोर्थ पूरा ये रिटर्न करेगा कि किस तरीके से क्लेम इन्फो दिया है एंड सो फोर्थ। एंड थोड़ा सा इस क्लेम इन्फो को आई नीड टू रिफैक्टर इट लिटिल बिट, बट या मोर और लेस हम यहाँ पे यही कर रहे हैं कि सबसे पहले चेक करेगा वो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो एरर थ्रो करेगा, अगर है तो वो अपना ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आर चेन कोड। तो ये पूरा चेन कोड का फंक्शन है हमारा। सो या सो सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। तो हमारा जो इसका एग्जीक्यूशन है वो हम एग्जीक्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। बट रिमेंबर हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा क्रिएट सर्टिफिकेट से, सर्टिफिकेट से हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सर्टिफिकेट से आगे हम चेन कोड डिप्लॉयमेंट एंड देन कॉलिंग दी चेन कोड वाला पार्ट होगा। सो लेट्स सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Okay, so let's get started with our today's video. What is most important part of it? So let's do first quick recap of our existing stuff, right? So here we have our chain code. I hope you know where is chain code in Fabric samples, asset transfer inside chain code JavaScript,
and then EHR chain code. Okay, so what we have done here, we have wrote a logic of certain components of certain business logic, like how to onboard the doctor. We have here onboard doctor logic, right? We have here onboard insurance logic. So we are going to onboard the two different type of companies. One is the hospital. One organization will treat as a hospital, one organization will treat as a non-operational, non-medical field, like insurance one or other stuff, whatever the private sectors will required. So these two things we gonna onboard in our use case, right? So for them, we have already registered this, and then grant access. So this particular function is used for patient when doctor is requesting for the access to update their record in the system, right? Get caller attribute function is to fetch their role and UUID from their credentials at when they are invoking that particular transaction. Whenever someone want to trigger any transaction on my chain code, so at that time I will check the ownership, who is the owner of, or who is a caller, right? So that's what get caller attribute. So like in Solidity, we used to take the message dot sender to get the who is the sender. So similar stuff we are doing, but here it's a completely customized. You can define what kind of roles and at different attributes you want to define, a role, some designation, or some any XYZ things, department, and so on and so forth. So now this particular thing is to add the record in our ledger, and this is for patient. Doctor is going to add the patient record. Okay, so this is get all assets. So when I want to fetch all the data on the ledger, that's how get assets will come into the picture. Now here we have some homework for you guys. So I want actually to build this product, but uh, I want you guys also to learn something, right? So here we go. So I have list out, I have given you so the small help. I've listed out all the methods which you guys can, which is required for our complete use case, or not completely, but it's more or less very helpful to create your basic prototype, or if you are building something on top of it, right? So because of course this complete playlist is for learning purpose, we are not building any actual production grade product. I just declare like what you can call uh, the key points, or you can say the disclaimer sort of things, because so many people will try to follow this as is. Please don't follow this, because there is a lot more things we need to do at production grade setups. Okay, so this is, here we go. If you want to do it in a production grade, so these all functions you can include in your use case. Get patient details by ID, get all patient, get patient record by doctor, filter the patient record by the doctor, and then insurance agent, get insurance agent, sorry, issue insurance, create claim. This is for insurance stuff. Issue the insurance against the patient, create claim against the patient for certain situation, and get that claim info and approve the claim, then onboard researchers. So now how we have onboarded the doctor and issuer, so similarly you can onboard the researchers, my R&D department, to uh, so they can do the research on the data generated on the platform, and then send consent request to patient. So this is for the researcher one. So if they want to use the data, so they will first send the consent to the patient, and then in exchange they will give the reward. So get patient data for researcher, and issue reward to patient, and claim reward by patient. So this is for the researcher, this is for the insurance people, and this is for the doctor one. Okay, so we'll try to, if time permits, I'll try to create few of the functions, but if not, then go ahead, feel free to go. And in this process, if you feel any challenges, always let me know. I'm there to help. Okay, so now, yeah, this is all about your chain code. Now what is a key point to understand here? At a time of get caller attributes, we are using here role and UUID. Okay, it means I want to fetch role, user role, and UUID at a time of invoking my smart contract. Perfect. So now we'll decide the structure of defining my credentials. So here we have one script called, let me zoom in a little bit more. Here we have one register org one admin.js. Just a second.
Register org1 admin.js. I have created this script. This script is responsible for registering admin on org1. Now this is a very critical point you need to understand. So we are doing here some using MSP, the access management or access control. Over here we are segregating our persona based with respect to their use, or you can say with respect to their organization. Org1 organization will be treated as a hospital, and org2 organization will be treated as a insurance in my ecosystem. And this complete network setup will be, let's say, comes under the government or some department or government department or something like that, right? So there how this chronology, or you can say the stake of my platform is get distributed. Okay, so org1 is responsible for hospital one, or a hospital stood up there org1. And here in ideal use case, if multiple hospital is getting onboarded in my system, so for them we can create a new node, and on new node we can set up a new organizations. Remember this thing. Okay, so uh, now, so let's understand this script. This script is pretty simple. So what's exactly we are doing? Very first, we are creating the, now we have our node is network is everything is running. So okay, before that, let's run our network. I have not started my network yet. So I hope you know how to start network. Very first, always remember to start your Docker desktop. Start your desktop. Where's my Docker desktop? Yeah, it's getting started. And then after that, to start network, we need to go to the change directory to, and I have given you the PPT as well if you forgot the comment. Okay, yes, our Docker desktop is up and it's running, right? So now we need to set up our network. So I hope you know the commands to run our network. You can find that command in readme.md file, right? Here in readme file, here is a command, or you can refer a PPT which is already in the description box. So the network architecture and everything we have mentioned. So let's grab this command. So always remember one more step. So first we need to go to the Fabric sample and test network directory, right? From here only we need to run this command. And the good practice is always before running a new network, so you can do network down, right? If there is any dependency or something is running in the backend which is not cleared properly, so this will clear and remove everything, right? So this is very important because this causes sometime problem, or it's cause problem while running some containers, and the duplication will come into the picture. So it's always better to erase their volumes and everything to create always a fresh network, right? So now we are going to create a fresh one. So now run this command. Okay, enter. Bringing up network. Okay, so now it will create a network. So yeah, where we are with respect to the organization credential one. So this script is pretty simple. What exactly we are trying to do here? See, you can see we have these. We are setting up network. So in our network, we are setting up two organization, org1 and org2. So org1 has their peer one, and org2 has their peer, right? So what exactly we are doing? We are to create a org1 register. We are connecting my this script with the org1 details. Okay, org1 said, you can see connection org1.json. We are connecting with this particular org1 metadata, or you can say org1 credentials. Yeah, my network is up properly. And then using those credentials, we are registering first admin. We are using the org1 credential to register the admin details, and based on that admin we will register the another users. So that's what we are trying to do here. We are giving you a hospital admin. You can see wallet.put hospital admin, and then after that we're gonna use the
onboard script to onboard different user, doctors or insurance based on this admin credentials. So now you can wonder about things like where is this path and how to figure out this path, right? So it's again pretty simple. See, whenever you'll create a network, you can observe one thing: some metadata will get automatically created in your folder structure. So where to find that, I'll help you with that. So you have to go to the test network. Inside test network you can see the organizations. Inside organization you can see this order organization, peer organization, and you can see here org1 and org2. These two data is auto generated whenever you will up your network. At that time only this data will get generated. So these all are your certs and TLS certs, TLSCA, and these all are in short, these all are credentials of your org1 network, right, or secrets. So what we need this connection hyphen org1 JSON. We are using this JSON where the PAM file, you can see TLSCA certs are defined, and their grpcs url is defined, so to connect to that particular peer. So using these credentials we are connecting with this org1, or we can say node 1 inside that organization, uh, sorry, org1 inside that node. And then using that we are trying to create the admin level privilege credentials, right? So one more thing I want to show you, how to find the, here you can see this is a YAML is very important. You need to understand if something goes wrong, you can check it here, like is everything properly structured or not, right? So yeah, Fabric CA is also here. Perfect. So these all are credentials. You can explore it. There are multiple types of credentials and all lot of things. Okay. Now let's get back to our register org1 admin.js script, where what we are doing here, we are trying to register my credentials. Okay. Now how to run this particular script? So let's go to the script. First make connection and then use the C orderer. And to do so, just check in your container is your C order, C org is running is not. Yeah, you can see C org1, C orderer, and C org2. This container should up and running for uh, to use this script. Okay, if this container is not up, then your script is not going to work properly. Not properly, it won't work at all, because it's depend on CSR. That's what we are using here. You can see corg1.example.com we are using to get the access of admin and then register admin1. So we are first trying to check is my admin1, but we are not giving the admin1 name. Will give the name to my credential is hospital admin. So right, so org1 is we are just trying to treat it as a hospital. Then we have to give here enroll admin and secret. This is the coming directly from the client, which is already in the YAML files. And then yeah, now let's try to register my org1. So what we need to do, we just need to do node, because this is the node setup. This is a node.js code, node, and then register. Okay, my bad. So very first, again, remember this. We need to change our path. We need to go back into the server node SDK. Okay. Now where is my server node SDK? Here is my server SDK. Now here we need to do node register org1 admin.js. So let's simply hit enter and hopefully it should work. Yeah, you can see successfully admin1 imported. Okay, why it's showing admin1? I think in script somewhere I am showing admin1. Yeah, this here, this is a mistake. Instead of hospital1, here it should admin1. Okay, that's fine, completely fine. But what's matter, inside wallet it should show hospital admin.id. Okay, so now we have the uh, admin credential of org1, that what we are calling as hospital admin. Okay,
Now what is my second job? Once now I have my credential admin. Now what we'll do, we'll try to register the insurance admin as well. So that is for my, sorry, this is register org to admin for insurance. Okay, so now what we'll do, instead of admin 2, now let's rename this one. Control F, global search will do this time, and they will run copy the insurance. Okay, we'll try to create insurance admin. And one more key thing I want you to notice here. You can see we are using here X509 identity certificate, which is again a one secure type of certificate, right? And we are using here MSP ID as org to MSP, and in org1 credential here we are using org1 MSP. So this is how you are segregating the two different organization, right? So this is the access control. And here for creating the credential we are using here org2. You can see connection to org2 details. So this is pretty important to understand. We are creating admins for two different organizations. Now let's try to run this node 2 as well. Org2, register org2 admin for insurance, and we got error. What is the error? Failed to enroll admin user authentication failure, it's showing. Now let's see what's the challenge. Yeah, here is the challenge. So at the time of enrolling, so here we need to remember enroll admin c dot enroll, enrollment id should be admin here, because this is the credential of already existing network. And here password is also admin pw, not admin 2. Now let's try it again. Yeah, we are good. Now we are done with the our insurance admin also. Now we can see we got the insurance admin. So yeah, we are good so far. So now what's our next step? Now our next steps to onboard the hospital doctor and insurance agents based on hospital credential. Now you can see here I have created one more script, which is onboard doctor.js. Onboard doctor.js is responsible for onboarding doctors. Sorry, first is responsible for creating the credential for doctor, right? So here you can see the difference between the admin type of credential and the normal user type of credential. Here what we are doing, we are adding one more column called attributes. We are calling here, we are adding, giving here role called client. We are giving here attributes, where attributes we can define the what role you want to do. Just we can change it to here doctor. Okay, then what is the UUID we need? So we can give here UUID like D001, oh sorry, 001. So like for doctor we will start from D series D001 or something like that, right? So this is the values attributes, and these attributes only we gonna fetch in my chain code, like the role and UUID. Okay, remember this. So here we in credential itself we need to define it, and then we have to give the here is which one is optional and which one is required. So both are optional, we won't giving it mandatory. So remember, this is the value of those credentials, these are attributes, and these are only the attributes. Okay, we can define more attributes by separating the objects. So this is a one object for one attribute. Okay, now this is the first part or first piece of work we are doing in this particular script. So what is the second stuff we are doing? Second step is we are invoking my chain code. We are using gateway. We are trying to connect with my channel, and then with the chain code, this is a chain code name, we'll change it. And then we are trying to submit some transaction. We are trying to hit the chain code to perform some transaction. So what are the transaction we're gonna perform here? We will try to onboard this as you have seen the chain code, there is already one method called onboard doctor, right? So onboard doctor is here. So at a time of when first we'll register the credential for doctor, once the credential registered successfully, using those credential we'll try to onboard the doctor also, because this script is running from
hospital as a owner, right? Because hospital is going to run the script. Okay, that thing also I'll show you how, what I'm trying to say. Onboard doctor. So here you can see, first we need to give the same thing, authentication, and then we need to give the which check, like is the identity is there or not. If identity there, and again we'll check the admin user as well. If admin is not available, we won't be allowing to uh, you know register this thing, and we are using the admin provider here, using admin, right? So user context, we are using the admin context as well to perform some operations. So based on admin user only, all this operation is going to perform, because admin, and who is admin in our use case? In our use case, hospital. Hospital admin is the admin. We need to replace this script with the hospital admin. Okay, so this is what we need to do, and then in script you can see this is the function which we gonna trigger from chain code. Onboard doctor, and we need to pass doctor id, so doctor id will try to pass as uuid, and yeah, and uuid, they will get off, I think, hospital. They'll check the role, they'll check the org1, and what is the authentication we have added here? This function should trigger from org1 only. You can see org1, and the role should be hospital of that individual who is going to trigger this particular function. Okay, so this is how we gonna define it. But now I think here is a slight problem. Who is going to trigger my onboard function? That is based on my Rama identity. Okay, and Rama, or we can say the doctor, is not a role of hospital. Okay. Mhm. So we need to use here my hospital admin identity at a time of calling chain code. Okay, not an issue, but for sure we're going to do those changes while updating the script. But most important part, we have registered the registered hospital admin, right? We have registered insurance admin. We have understand how to onboard the doctor script, right? But now, to invoke the chain code, we need chain code as well, right? So we need my chain code up and running. So what are the steps to update my chain code or up my chain code? So here you can see we have this command in readme file where I want to deploy my script on my ledger. So on network. So as of now, we have not deployed our chain code, right? You can see here no chain code container. We cannot see any chain code container over here. So to deploy chain code, simply we need to clear this one, clear, and then paste my command. So remember chain code network.sh again. Again we need to change the directory. Always remember, you should run this from where? Test network. Okay, so I'll create another separate tab, and here I'll change it to fabric slash. Okay, from here you can run the network.sh script. Always remember, network.sh script is in only test-network directory. Now they will first package my chain code, and then they'll install that chain code on my each organization 1 and organization 2, and then it will take the approval. You should know the life cycle of it. It's pretty important. Okay, now it will take some time. So in meantime, let's update our script. So what we need to do? Hmm. This is my doctor on Kwan. So instead of Rama, I'll give the name of, yeah, Rama could be the doctor name. So we can give Dr. Rama. Okay.
give Dr. Rama is my username, or we can say Dr. 01. So like their user ID and the name, something like that. So this will we give the credential name. So now wherever we can see the instead of here Rama. Oh shoot. Just try to find the repetitions over here and let's try to change it. Instead of Rama, we need to give Dr. Rama. Dr. Rama, okay, perfect. Here it's two time. Wait. Okay, so now we replaced, and instead of admin, we need to give our what is our admin name? Here you can see in wallet that's hospital admin, right? So here we'll change admin, and here we'll change hospital admin. Perfect. Yeah, I think so. And this script is dedicated for onboarding hospitals, onboarding doctors only. So we can give it the credential admin credential as hospital admin. Now we did that. So uh, rule. What is a rule we need to define on the doctor side? Is like the doctor, right? And the name of the user UUID is like D001 we have given, or we can give D001, or we can keep the same as the ID name as well. It's up to you how you want to figure it out, but it's okay. And then this we can keep as it is. Enrollment ID is Dr. 01 Rama, and it's better to give UUIDs this as same. So it's easy to understand, right? In our ledger, we are adding UUID, so we can map this name with their credential. It's easy. And then so only this is good so far, but the concern for me is now I want to invoke the chain code, but the challenge is uh, I'm trying to invoke it with the uh, Dr. Rama. That's not possible. I want to onboard, so of course I need to use here my hospital uh, hospital admin, okay, to invoke the chain code. And then what I'm doing from chain code side, I'm checking the role of the admin, but inside admin credential, okay, so not here I'm not defining any role, right? So that is a challenge for me. Now we need to do two things: either update my admin and add rule into it, okay, or else create another credential for create another credential called hospital specifically, and then use that credential, and in that credential add the role as hospital, and then trigger your chain code, right? So that is, I think, valid, very very valid point to do so. That's how we can do it. So what we are waiting for, let's do that actually. What we'll do, we'll create another script only for specific hospital chain code installation. Tier 0 was failed, deploying chain code failed. What's the error here? Failed to execute, error sending timeout expiry while executing transaction. Uh-huh. Chain code installs failed with status code 500, error in simulation, failed to execute transaction. Let me debug the issue. What's the issue? But you can see the container is not up.
Docker PSFNA. Uh, the Fabric Node env. What's this? 5 minutes ago. I can't see my chain code envs. Okay, because they created the package. How to debug these things? Very first, we first need to check like is their package is created successfully or not. To do so, we need to go to the network. Yeah, here I can see the package. They have deployed the package and everything. So we can check the logs of any of the container. So to do so, let's go here. We'll go org one. Here you can see log. Failed to invoke chain code. They are calling failed to invoke chain code. And what is this? Failed to invoke chain code lifecycle. Finish chain code lifecycle duration 3. Error detected. Common is equal to chain code type not supported. Node command detected. Acha. There is some mistake I think in the chain code side. So they are mentioning endorser chain code is not detected properly. Okay. Simulate proposal, fail to invoke chain code, timeout expire while executing changes. Okay, let me look into this particular part. But remember, meantime, you can explore the credential parts, how to onboard it, and so on and so forth. Okay, but no worry. I think we can continue with our work. Here, what we need to do now, what was we supposed to do? Uh, 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 or else anyway I want to update the chain code logic as well. So instead of role, what we'll do, we'll just find at the time of onboarding like is it admin or not, right? So I'll update this logic. We need to update this chain code logic to make sure that it is admin, right? It is MSP, whoever is using this particular thing. It should be the org1 admin. It should not be the normal user, right? That is a better, I think, privacy over here, right? Access control. So, guys, feel free to drop any messages if you have any search challenges. You can see now I got one error, so I'll look into it and we'll try to address this issue in the next video. So, in meantime, just go through the videos and let me know if you face any challenges or any doubts. I'm always up there. So, thank you so much. If you like my videos, do subscribe, like, and share with your community. Thanks so much. Bye bye. Jai. So today we're gonna this is the continuation of the chapter 08. So we first going to onboard the hospitals, onboarding the doctors, onboarding the our insurance companies, or onboarding our insurance agents, and then we're gonna deploy the chain code, and we're gonna see to we will first time see the interacting of with our chain code using Node SDK. So without further ado, let's get started. But please don't forget to like, share, subscribe, and follow my YouTube channel. Thank you so much. Let's get started. So let's get started with our video. So very first, as you know, we need to set up our network, right? So let's do ls to check is my Docker up or not. Do Docker ps, and yes, Docker is not up. So we need to switch on my Docker desktop. Docker desktop. I'm using Docker desktop. You can use Docker CLI as well with respect to your comfort, but using Docker desktop is better, right? So yeah, and one more important thing, you can find this repository, this complete code base in the GitHub. You might find that link in the description box. So feel free to check out the GitHub repository. Okay. So yeah, my Docker is getting up, and we need a commands to
start our network. So here you can find, to test network, very first we need to get into my this Fabric sample test network directory. So what we'll do, we'll go to the cd and then Fabric samples and test networks. Yes, I get into my network. Okay, yeah, I know. Let me just first zoom in a little bit for better visibility to you guys. Okay, so yeah, uh, now it's too much zoomed in, I think so. Clear. Okay, now my Docker is up. Now we need to run our command to set up, to start my network. So what is the command? This is the command, network.sh up, create channel, ca-s using couchdb. We'll use the couchdb ledger over here. So let's hit enter. Yeah, it will take some time to get started with my network. In meantime, what we'll do, I'll give you the walkthrough of what exactly we're gonna do in today's video. So in previous video, we already created the admin credentials using MSP, okay, and we created the credentials for org1 admin and org2 admin. Then we tried to uh, yeah, we created the credentials for, I think, doctor as well. We tried to onboard, but in deployment of chain code we got error. So what we gonna do here today, first we'll try to deploy the chain code. We'll do the complete process and then we'll try to onboard, uh, again create my admin credential first. Using admin credentials we'll create a hospital credentials, hospital 01. So hospital can, so there is very important key thing to remember here. We have two organization. First one organization is completely managing the hospital entity, and second organization is completely managing the operational entity like insurance and other uh, data scientist and other stuff. And the first one, who is this one, like register organ admin, this admin is going to onboard my hospital, so they can onboard multiple hospitals in my ecosystem: hospital 1, hospital 2, hospital 3. So we will create a admin for each hospital: hospital 1 admin, hospital 2 admin, and hospital 3 admin. So hospital 1 can onboard their own doctors, and hospital 2 can onboard their own doctors, right? So that's how our chronology will work. So yes, my network is up now. What we'll do, uh, we'll try to deploy my chain code. Think I need to do little bit zoom out. It's too much zooming. So yes, let's go to the Fabric samples. Inside Fabric samples, I know where is. I hope you know where is the chain code in the Fabric basics. Chain code JavaScript, lib, inside lib, and this. I hope you are not getting disturbed with the sound of the pretty birds, but yeah. Uh, get all assets. So this is our chain code, EHR chain code. So I have already mentioned here comments. So, and I have updated the code little bit with respect to the proper standard where we can get the transaction ID and onboard the doctor. So before onboarding doctor, at a time of onboarding doctor, we're gonna check like role is hospital or not. Okay. So now we need to check what is my command to onboard the doctor. So here is readme.md. So deploy chain code, and let's grab this command. You can find this in readme, and let's try to hit this command over here. So yeah, again it's gonna take some time. In meantime, let's head towards our server node SDK. Server node SDK is the another separate stuff where we are writing the scripts to onboard org1 admin. So just try to understand the chronology. Let's start. I'm explaining it again. Org1 admin is the highest credential or highest privileged authority. So they're gonna onboard hospitals. They can onboard multiple hospitals within their organizations, and then org2 can onboard the multiple insurance or another operational entities within their organization, right? And then hospital 1 will onboard the doctors. Okay, so just remember this thing, because at the time of execution this is gonna help. This understanding matters a lot, right? So once my network is up, here is one thing, here's one catch actually.
Now you can see my network is up. I'm deploying the chain code. Network and chain code is two different things. We can deploy multiple chain codes on top of my network. So as of now, there is my network is up and ready. I can see order one, see org one, see order. So yes, my chain code is also getting ready. I can see the container. So in this situation, okay, perfect. I think we are all good. We are all set, and we are good. But there is one key point to remember. If before deploying my chain code, I can onboard the admin on my network. Because my network is up, my organization is ready, so I can onboard the I can create a credential for admin, and I can onboard the hospital. Until and unless in this script you are not using chain code, that's the prerequisite. Okay, if you are using chain code is in your scripts, then you first need to deploy the chain code, and then only you have to use the script. So in this, just pay a little bit attention over here. In register org one admin, we are not invoking chain code. Okay, just we purely creating the X509 identity certificate for my admin with admin privilege. And then using this admin, what we gonna do, we are onboarding the hospital. We are onboarding hospital with the role hospital. You can see we are giving them specific. The role is hospital and the UUID as hospital 01. Okay, so and the name is hospital 01. My credential name is hospital 01. Remember this. So we are using here, you can see hospital admin. I'm using hospital admin to onboard this. And how I'm generating this hospital admin, this is my org1 is nothing but the I'm creating here put is this, when this is the name of my credential, this will create. So as of now, let me remove my wallet. This is the previous credential. Let me delete this one. Delete it. So we're gonna create a fresh one. Okay, so to do so, what we need to do, we need to change our directory, and now we need to go into server node SDK, because my script is in server node SDK ls. So now first we'll do register org1 admin. Yep, perfect, it's got registered. I can see it here. Hospital admin got registered. Now I will go to the switch to the hospital 01, where I'm now this is the admin of my whole organization. Now this hospital admin can onboard the one specific admin, a specific hospital in my ecosystem. Now it's up to you what type of naming convention you are giving. It could be the scenario where one organization itself can act as a one hospital, or either one organization can act as an admin of multiple one district or multiple district or state. It's up to us how you are defining the topology, right? As of now, we are considering like my organization, like infra identities, the admin of my multiple hospitals. So I'll onboard the hospital now. So to onboard hospital, node register. No, sorry, not register. Onboard. We need to onboard hospital 01. Now let's go ahead. Yes, I can see. I got my credential. I got the hospital 01 onboarded. Now the important part here. So here in onboard doctor script, what is happening? Let's go through it a little bit. So here is happening two things. First one, we are connecting with our normal with the YAML file of my org1, getting the credential, using hospital admin. Like now we have freshly created hospital admin as a 01. Using that hospital admin itself, I am creating the doctor certificate and all those things. I'll get created, and then using this, once I've created, now what two thing is doing hospital admin. First one is onboarding doctor, and then second thing is they are uh, registering this doctor in ledger as well in my blockchain. To register that, what we are doing, we are using the gateway to invoke my chain code. I'm passing this identity hospital 01, this hospital 01 identity I'm passing, and then I'm connecting with my channel name is itself is my channel, and then we are connecting the our chain code. You can cross check the chain code name here in your container. So where is my container? Yes, here the container name is, you can see this is my chain code name, EHR chain code,
right? So here the same thing we are passing HR chain code, and when we deploy the chain code at that time also we'll get the chain code name in the logs. So now what we are doing, we are registering the doctor in my blockchain ledger. So there we are passing the doctor ID, hospital name, from which hospital they belong, what's the doctor name, and the city. Okay, so we pass these details. Rama and city belongs to Pune, and then we will do the submit transaction over here. So while submitting transaction, so remember this thing, this is nothing but my smart contract method. I'm trying to trigger here smart contract, or you can call it as a chain code. I'm trying to trigger my chain code over here using onboard doctor function. This is the onboard doctor method I'm calling from my chain code with these details: doctor ID, hospital name, and then city. Okay, so once we have done that, the second thing what we are doing, we are evaluating the transaction. Evaluate transaction is here to call the my get operation. So whenever I want to read the data, there is two type of operation always. There is a one write operation and read operation. When I'm doing the write operation, at that time I'm going to use the submit transaction. Whenever I'm doing any read transaction, read operation, at that time we'll do the evaluate transaction. So to get the all transaction is the function from our chain code. I'm triggering that and getting all the data from my ledger. Remember that. Okay, so now let's try to hit this operation or hit this query. Just look to clear node onboard onboard doctor. Okay, let's see. First it will create a credential. Yes, credential got created. Now yes, perfect. So you can see my transaction got submitted here, onboard doctor success, and here in get all assets I can see these yeah, operation got performed. And for cross check purpose and for debugging purpose, you can check the logs of your chain code container always. So here you can see state transfer to establish, you can see successfully registered new node, and you can see some onboard doctor result, some buffer is got here. So you can see record ID, this got registered here in my channel. So all the transaction, whatever operations we are doing, you can perform, you can see, you can track it over here in your container registry. So it's good. Now we have did our end-to-end operations, from setting up network, from creating our chain code, from deploying our chain code, and then invoking our chain code and getting the data from my ledger as well. So this data is nothing but this data is coming from my ledger. You can see with the record ID, this is not the transaction ID which got generated in my blockchain. So now we have did for hospital. Now let's try to do it parallelly for insurance agent. Okay, so we have did for one thing. Now let's try to do it for another one. uh, 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 uh. Now let's try to check my or node uh, register org 2. Is there anything I need to change? Let me just check. Let's review the insurance admin pw is credential is correct. uh, am I passing here org2 here properly? Yes, previously I was using org1, here now I'm using org2. Let's hit enter. Perfect. So credential got created for insurance admin, right? So now we'll use this insurance admin uh, to register the insurance company. Perfect. So we need to create another you can say, we'll copy this onboard hospital one, and we'll use this. Let's do copy first for onboarding companies, insurance company. So let's rename this one. Oh, insurance company. Okay, so now insurance company is responsible for onboarding insurance agent. Okay, so now uh, this is the onboard insurance company using org one admin, insurance admin. What are we gonna do? We'll create an insurance company. Okay, so what we need to do, we need to very first change wherever we will find org 1, we'll change it to org 2.
Just always remember to do this very carefully. If you do any spelling mistake here and there, your script is gone. So you need to debug it in a very great way. So this can happen to me as well. So finger crossed. Let's see. I hope anything is bad not happen. Yeah, one more organ is here. So let's try to match their complete syntax. I know we can do it directly, but I'm just trying to find if there is any another repetitions over here. But it's only one repetition. Okay. Now, what we need to do, we need to change the details. We have did this. Enrollment ID is like, let's give this insurance one. Company 01, insurance company 01, client role, and then here we can say, okay, now here, what kind of role we need to give. So to verify role, we'll check once, cross check our chain code, like what role they are expecting for onboarding. You can see this is the method we have called onboard doctor. Now we are trying to onboard insurance. In insurance they are asking for insurance admin as the role. So we can give yeah, so let's copy this one, and in our register or onboard insurance company, they need this type of role, so we'll give this. So here I must say, here is a slight mistake here. Insurance, the role should not be insurance admin. Here role should be the insurance company or something like that, because admin is cannot going to trigger your uh, org admin is not going to trigger your chain code directly. Using org admin, you have to create a users, and that user will going to create your trigger your chain code, and that user can perform any kind of role. So that's how I'm giving here role. Okay. And so this is the value of UUID, whatever you want to perform. So we can do one more thing here, just simply do hospital, and then instead of hospital 01, we can pass insurance company 01. Okay, now let's see if there is any. Yeah. Perfect. Insurance company 01. It's the credential name, and I hope I changed the hospital admin. Now, instead of hospital admin, we need to give this credential which we recently created, insurance admin. Okay, using insurance admin, we are going to create an insurance company 01. I hope my credential is good. Yeah, again, here is the one. So let's find this repetition as well. That's better. And then replace it. Insurance admin instead of insurance admin. We'll do insurance admin. Okay. Is there anything called related to hospital? Any repetition? Any single one? No. Perfect. I think now we are good to go. Let me cross check again. Yeah, we are good. We renamed it as well. So now we need to do run onboard insurance company. Okay. What happened? SU. Okay. Oh, spelling mistake. Okay. Not sure. Yep, my credential got created successfully. Now what we need to do, now we need to onboard insurance agent, and we'll trigger the chain code as well along with that. Okay, so now let's jump to our onboard insurance agent script here. So okay, we need to update the script in a lot of better way. So now let's observe the script here. Very first, let's see the organization name is org1. So let's do first activity this. Let's update this to org2, or either I'll do one thing. Let's do one thing. uh, let's go to the onboard doctor one, because this is script is similar. So grab the onboard doctor completely, and then we'll go to onboard insurance agent.
and then we'll do control A, control B. Okay. Now here what we'll do, instead of doctor 01, we'll do insurance agent. Okay. Control F. We got 14 repetitions. Wow. Oh, at least syntax answer. Yeah. We need insurance agent. Okay. Insurance agent. Let's say 01 only. Uh, okay. Mhm. Let's do this first. Insurance agent 01. His name is also Rama. It's better. Now let's check hospital 01 instead of hospital 01. Control F. Hospital instead of hospital, we'll use our company, right? We'll use this credential which we have just recently generated. So we'll use this one. Use this one. Yeah, chain code will remain same. Same. Onboard doctor will check the function name. What is that in from chain code itself? And let's look good. So instead of org1, now I just find org1, or we need to give org2. Oh, sorry. org2. Just replace org2. And again, I can see hospital admin here. So instead of hospital admin, so what was my this one? We'll give insurance admin. Okay. Insurance. So what we are doing, insurance admin. Yeah. Perfect. So anything else missing? Let's check it again. Point it to org2, point it to insurance admin. Insurance admin is creating the insurance agent certificate, and then using the insurance company. Uh, insurance company is insurance company has a insurance admin role, so they are going to trigger my chain code. Now inside that, what is the parameter we need to pass? We need to check parameters, and then we need to check the method, which method we need to call in from the chain code. So this is my chain code. Yeah, onboard insurance first we need to give agent id. Okay. So onboard insurance agent, we need to give, instead of doctor id, we're going to pass agent id, right? And then agent id is this one, like, and then what's my second insurance company? We need to pass what's the insurance company and name and city. Okay, and onboard insurance is the function name. So it's the company, insurance company. We need to use insurance company. Name, city will remain same, and then we'll change the city to Amaravati. Okay. Perfect. So now check the function name. So function name is here onboard insurance. This is the method we're gonna call, and you can see here we are checking. We are checking from org to MSP, and from org to MSP we are passing checking the role as insurance admin. Okay. So yeah, let's check that as well. I think we have not checked the MSP here. So let's go up. Yeah, it's MSP mentioned here org1 only. So you have to make sure that it's org2. Okay, I don't think so. There is a multiple repetition of MSP, but let's check. It's better to cross check. It's only one. Better. So I think we are good. Here we will give agent, and then uh, yeah.
We are good. So now let's see one more thing. Now here what we are doing, we are calling the chain code with respect to the function or from their function name, and then we are getting the data as well, and we are passing the data in variable itself. But we can create a Node.js APIs as well for the same script, and there we can using the API we can pass this data from my postman or from the body request body, and then we can trigger it the functions for multiple things. So that's how we're gonna do it for upcoming videos as well. So now let's try to run my node onboard insurance company. No, not company, sorry, it's we're gonna onboard insurance agent. So for the best, now we got some error over here. Failed to register user. This no valid response from peer. Imported the wallet. Yeah, insurance agent is got created, but there is some error in the transaction. Insurance agent 01 Rama already registered by insurance company 01. Yeah. Okay, so now let's try to run our script again. So there is a small glitch in our chain code logic. That's why I need to, update my chain code and run my network again. So what I did, so here you can see our when we are onboarding doctor, it's working completely fine. So there is a mismatch in this particular logic when we are fetching the JSON array from my ledger and comparing like is that ledger is empty or not. So here previously, yeah, at this point exactly. So here I was using the OR operation instead of AND. So and then this is not equals to greater than zero. It is like the equal to zero or something like that, not equal to zero. So that's how we have updated our logic where like insurance, so whatever the JSON object, so what exactly we are checking here, we are getting the state from the agent ID and we are checking is there any object. If that object is greater, is they are fetching the array of list of items, and if that array is greater than zero, it means we got our record and it's already existing in our ledger. If it's not, then we'll simply print insurer agent is already registered on the ledger. Okay, so now let's try to run it our script again. So the last script is what we are trying to run is like onboard our insurance agent. Okay, we already onboarded the previous credentials like doctor, hospitals, and then insurance company and insurance admin as well. Insurance admin and then insurance company using admin. Now using insurance company, we gonna run the script onboard insurance agent. Okay, so now simply node onboard insurance agent. Okay, see the same time, yes, we are invoking chain code as well. We now it's not giving any error, perfectly onboarded. And you can see here we onboarded the insurance agent 01 with the name city name as Amravati, then insurance company, and then insurance ID name Rama, and so on and so forth. But at the time of when I get all assets, you can see it's getting two different records. First one is my doctor record, which is we all onboarded earlier, and the second one is my agent one, right? So here we go. We are good with invoking our chain code as well. We were successfully able to get my records. Now, one add-on thing we can do. So what's our next step now? We were able to get the data properly and invoke these transactions, right? And this is my transaction ID, we can say, with respect to both transaction IDs are different because we are generating transaction ID at a time of record when we are passing it as record ID. That you can verify in our chain code. Generate record ID, if you go to definition, you can see I'm getting the transaction ID. I'm using transaction ID and appending that particular transaction ID with my record hyphen transaction ID. Okay, so that this is all about this video. So now what is our next step? Next step is
to convert all this logic in API. So we want to onboard doctors. Now next step is to create a patient, and then create a patient record, give access to the doctor to update their patient record, and so on and so forth. So all those things we're gonna do in next video. Still that point, see you there. Bye bye. Jai Hind. So now, very first, I'll give you a walkthrough to the our updated chain code. Like we have updated our chain code and what are the functions we have there, and then I'll show you the uh, Node SDK setup. Okay. Very first, let's see the chain code. So inside this chain code, we have multiple methods. Okay. So where we are onboarding patient, this is already we have seen in previous video. When we are onboarding patient to script, so we will create the entry in ledger for them, right? So add record is like this is going to add the patient record for the patient, and this can be added by the doctor. So yeah, onboard patient is something new we have did here, and these two functions, these all functions we are going to trigger from APIs. Yeah, you have heard me right. So fetch ledger is also one of the function we have created. This also we're gonna hit from API. Okay, so these all methods we are going to hit from our APIs, and then there are few another functions which we have already wrote, like onboard doctor, onboard insurance, onboard insurance agent, like, right? So these two functions we are calling from script. So this is for onboarding my entities or onboarding new users on my ledger. Apart from patient onboarding is from API, other onboarding is from a script. So this is something which you can migrate anytime. I'll show you what I did changes in script and what the changes you have to do in API. So I want to give you the flavor or glimpse, like how you can do using script and how you can do using APIs. So that's the thing. So this is a quick glimpse of your chain code, but don't forget, like, this is already I have updated in GitHub. If I have not updated, I'll push it again, so you can check out this complete code from my GitHub repo. Okay, now not to worry on that side. Now let's move to the important piece of our work, which is server node SDK, right? So in previous videos, we have seen like we are calling these scripts onboard doctor, onboard hospitals. So there is a certain sequence to do that, right? So don't worry, I have drafted that sequence properly in README file as well. So I have moved all these scripts to the cert script, and there is a new setup we have did for our node server, which is app.js we have to do, and then there are some helper scripts to register patient. To register patient, what we need to do, there are certain stuff simple, like if you are registering patient, then we have to create the X509 certificate for them to manage their identity and to track the user, right? So to do that, we have another few functions, like let me just open inside. Okay, I think I need to increase the font size as well. Yeah. So I would like you to show first app.js, like how many methods we have here or how many APIs we have built. So this is my app.js which is running on 5000. So very first we have status, then we have register patient, where we are registering patient. So when we are saying registering patient, in the sense, in this particular method or in this API, we are creating the identity for the ledger. Okay, we are creating the identity, we are creating the certificate in the wallet, and then using that identity we are will perform the different operations, right? So that's the only thing. So this registered patient API is going to call this helper .js method. I'll show you here. You can see helper. We are using the helper script to register user. Inside that, what we are passing parameters: admin ID, doctor ID, user ID, role, and then the some metadata: name, date of birth, and city of that patient. Okay, so if we go inside this script, so we are calling, there is two functions in this script. So first one is register user, and second one is login. So login is like just check the credential if you have that credential, and then logged in that user. As simple as that. You can add extra logic into it, of course.
Now in this registry uses similar to the what we have already wrote the script. So you can see, you can observe with this scripts closely, this function. So where very first we are setting up the path, we are connecting with our organization, and then we are adding that MSP IDs, like, right, we are using the CA certificate here, certificate authority, and all those things we are using. We are using the same wallet path we have already here. And then from this, what we are doing, just a second. Yeah, so what we are doing, we have admin certificate here. We have, so admin certificate is something which is responsible for creating this certificate, right? So we are giving admin certificate, those who have admin certificate, that certificate we are passing from here API itself, that's called admin ID we are passing here. Sorry, sorry. We'll pass that admin ID. Admin ID is nothing but the a certificate which has the admin authority, that username or that certificate name will pass in admin ID. And then we have to pass the doctor ID as well. Doctor ID we are passing, where doctor is going to onboard the patient, right? So this is all about till this point, this is all about certificate creation process. And then here we have our gateway, we have started our gateway code here, where we are using doctor identity to onboard my patient, because doctor can only onboard the patient in my ecosystem. That's the funda we have already added here, right? So doctor is onboarding the patient, and then that doctor can triggering the chain code. So I'll change my rename. I did some testing, so that's why I've updated the chain code. So it should be like EHR chain code only if you are deploying that chain code single time. Uh, then this is like we are setting up the arguments, like what arguments we need to pass, and then we are passing these arguments. Now onboard patient, we are calling this function. Sorry, this function is, this method is nothing but my chain code method. Here we are triggering the submit transaction, because we are performing a write operations to onboard patient. And in chain code, we can say here onboard insurance, access grant, and then yeah, onboard patient is the method where we are calling. First, we are taking, yeah, onboard patients. So here we are extracting the arguments from where we are passing, and then this is for my debugging, like is my variable getting properly added or not. And then we are, so most important part here we need to remember. Now please pay attention here closely. So here what we are doing, we are first creating a key, the composite key, with respect to the sequencing, like for patient we are adding the patient keyword, for doctor we are adding the doctor keyword, for record, for normal record, like inside where we have prescription and other medical record, for that we are adding the R keyword or record keyword for that key. Why we are doing this? Because here we have changed our data structure a little bit. So everything, whatever you are going to store in your ledger is going to act as an object, is act as an object. In the sense, let me show you the format how we are storing the data. So we are storing our data structure in this way. Earlier I defined like this array should be the one single one, but that's not the right approach. Here what we are going to do, patient object will be different, and then record object will be different. So patient, let's say I have onboarded 10 different patients, so that 10 objects will be different. And let's say I have onboarded each, each patient has one record, so those 10 records will be different, but inside that record itself will track the patient ID, record ID, doctor ID, and all those things over here, right? So I think patient ID is not mentioned here in the sample, but yeah, we are tracking patient ID as well. And then we are tracking the proper naming convention to filter out. Whenever we record only records, we can filter out only patients, we can filter out only doctors, we can filter out all these things we can do. Okay, so please remember that to segregate it. So this is like we are doing normalization of our database sort of thing. We don't need to do clumsy or mixy stuff over here. So we have to keep it very separated and very normalized, so we can filter out and for speedy operation. So remember for future use cases as well, we have to split our data as much as possible for easy use. Let's back to our onboard patient code. Yeah, so here that's we are creating keys, and then first we'll check the record if that record already exists in uh,
this patient already exists in my database or not. If yes, then we have said already exists. If not, then we'll generate this record. We'll draft the object, and then we'll put that object into here. Put state is important, where we are writing the data on ledger, right? Buffer dot from stringify patient. Okay. And then it will return a string with statement like, yeah, patient, this id is registered. Okay. Now now I think it's good time to start our process. I'll show you the steps to follow. So I'll explain the chain code again when we'll run the code. But in meantime, let's get started with how to set up my complete project. Now, please pay attention here again. So this is important steps, because there are certain changes in these steps. So what you need to do properly. But not to worry, I have written everything over here. So very first, please refer the readme. If you are the first time user who are directly following up with the eighth video, so remember to start install script. Then we have to go to check your test network, check your setup. Do simply get into the test network and do network.sh up to check your network is running or not. If you are already the existing user who is following this playlist, then you don't need to do that. But for sure, for practicing and for hands-on, you can do that. And now what we need to do, we need to run our network using couchdb. We are using couchdb our ledger, and then we are creating a channel with my channel default name, right? So first we need to go into the test directory for fabric sample, and then test network, right? Then here we need to run this command to up my ledger. But now see, I got error. Why I got error? Because my docker is not up. So don't forget to up your docker. Let's switch on the docker. Yeah, docker is giving error. I think it will get started. Cool. So it will take some time, might be a minute or so. Yeah, it's here. So check all images is there or not. Yes, all images is here. Now let's go to the same command. We have to rerun this command. Now, yeah, it's bringing up the network. Okay. Now, there's something missing in my code. Let me just refactor it. I'll check my chain code name is proper or not. In my testing, I have updated the chain code name. So let me just quickly check that. Yeah, here I need to give EHR chain code only instead of 0102. So this is like something where we can deploy the multiple chain codes as well, if possible. If we encountered any error, then if I need to do any modification inside chain code, at that time I'll show you how to call sorry, onboard. What is this onboard hospital? How to deploy multiple chain code as well. I will show you not the issue and how to use it. It's pretty simple. Just we have to deploy the chain code again. Yeah, here it's chain code only. This is which script, onboard insurance company, no need. Onboard admin, no need, no need. Okay, helper, check helper chain code. Helper chain code, it's on the top, I think so. Yeah, this is, yeah, it's your chain code. Let's check invoke as well. Yeah, invoke is also sure. Let's check query as well. Query is the one function. So here is two scripts. Invoke, all write transaction we are doing in invoke. All read operations we are doing in query.js.
So simple. Why we are doing like this? Because when we hit any read operation, at that time we have to give evaluate transaction, right? Evaluate transaction method we need to call, and whenever we are doing any write operation, at that time we need to call submit transaction, right? So that's why we are using two different script to keep it separated, and then argument structure will be also same. So that's why we are keeping it apart. Now we have, now I can see my network is up, channel is created successfully. Now second step, deploy chain code, right? Chain code deployment command. So deploy chain code, we need to follow this command. And please remember here you can change the chain code name whatever you want, and please define your directory according to. Remember to run this command from test network only. If you cannot run this from any other directory. So pure life cycle, yeah, it will take some time, it will do the package. So I hope you remember the chain code life cycle. Very first it will commit, it will package my complete chain code, it will simulate the transaction, it will check like is my chain code is running properly. If it's not running properly, it will throw the error through the peer will say, hey, your simulation is not working properly, right? Once it's simulated, it will package and then it get committed, but before committed it will take approval from all the peers. Like now we have two peers in our two organizations, it will take approval from both, and then only it is going to commit to the final stage. Yeah, like everything is proper, so now you can see its approval is going on. uh, then it will commit mileage chain code. Yes. Okay, committing is happening. Yes, perfect. Okay, perfect. Now chain code deployment is done. Now what do I need to do? Now you need to go to main directory. Okay, remember that. Go to the root directory, change your to the server node SDK. Now here we need to follow certain steps. Let me just do this here. So you want it to do what we need to do. So this I have added here network down command as well, but you have to run whenever you are shutting down your system or when you are closing your system. Please remember to do network.sh down command, right? Because if you close your container by directly to docker or something, then your network might get affected, or your system might get affected, because some process might get running in the backend. So please remember to do follow this step to close your network. Very important. Okay, now to register admin, what we need to do first, we have to change the directory, then we need to follow this command, register org1 admin. If you remember, we have two organization in our organization in our complete network topology. Okay. So what we need to do, now I have already did testing, so I have lot of users and credential over here. So first I need to remove this wallet directory. Please remember these steps to follow from your side as well when you are doing practice, because this in code itself we have mentioned, if this user's credential is already present in my wallet, please don't register that, right? Or say duplicate user. Even though if you will try to uh, create it from ledger, our server will be aware of the users, so they know how many users they have created. So from server side they will give error, from node side or organization side. So now let's try to run this script again. Yeah, successfully created admin 1. Now let's try to create a admin for or 2. Yes, successfully created admin. Now we'll perform operations with respect to organization 1, with respect to organization 1, in this is admin 1. So node search script onboard hospital 01, we'll try to onboard the hospital. Let's clear this one. Now this is the hospital with admin privilege. This hospital can onboard the doctor. Now using this hospital certificate, we're going to onboard the doctor. Remember the doctor name and all those things. So Dr. Rama 04 is my name, and then you can see here when I'm
triggering that particular doctor onboard doctor event, I'm calling the chain code as well. This thing is coming from the chain code. I recorded their details in chain code, right? So onboard doctor operation is performing on the chain. So this method is got triggered here. Can show you. I can show you here onboard. Yeah, onboard doctor got triggered, and then so what most important, now we can check the logs as well. I can show you here. Now we just triggered this function. How to check logs? So go to the container. This is my EHR chain code container, right? So I'll go here. I'll check the logs. So you can see org rama org raw org doctor. These all are the logs coming from chain code directly. Okay, onboard doctor result. This is also coming from the chain code, right? This all thing is chain code stuff. So this is how you can debug, and you can check like, is this facing any error or something like that. Perfect. Now we have did this. So now let's try to go ahead and let's try to perform the similar operations for insurance also for my organization 2. So this is for organization 2, and then this is for my insurance agent. Okay. Yep. Operations performed successfully. It's behaving properly. Okay, good. Now you can see this operation is also got triggered. Now it's good time to trigger our APIs. So now let's open our postman. Don't worry, I'll give you postman collection as well. So I have prepared the postman collection to trigger APIs. It's taking time. Open, buddy. So these are the APIs we have added here. So in meantime, let me show you your homework also. So very important to give homework if you want to do things in proper way. So you can see here we have multiple things. So this use case is very vast and very beautiful one. You can do a lot of more things. So I've given you all the basic stuff which is required for any good project. But if you have to make it a production level or product level stuff, then it's always advisable to create in a full-fledged way. So I commented here methods which you can do. Get patient details by ID, get all patients, get patient record by doctor, insurance, right? So these all methods you can do from your side, and then follow the same process to uh, do the script. You don't need to do the script for this. This is directly you can write it in APIs, right? So let me give you the glimpse of APIs as well. So very simple. Now let's say we will going to call the fetch ledger. Okay, this is my API. So these are the collection I have created. Let me zoom in a little bit. Oh, right. It's not. Anyway, this zoom is not happening. Zoom it. अच्छा, control plus equals. हाँ, ठीक है. So see here we have fetch ledger function. So here we are passing the user ID using hospital 01. We are going to try to fetch the ledger. So first what we need to do to call that API, first we need to run our server. Till this point we are doing everything from our script. We have not set up our server. Now we'll run our server app.js, and then yeah, now our server is running on 5000 port. Okay, so now let's get call the fetch ledger. Perfect. Now you can see we have here multiple two records because we have onboarded Dr. Rama 04, and their details. You can see we have record ID and transaction timestamp as well. These two things I have added in Ledger to check the transaction. This is record ID is nothing but this is my transaction ID, and I added embedded my transaction ID with my the record prefix. Okay, so this is how you are going to fetch the ledger from the chain code.
right? So how you are doing the flow? What is the flow? So you can see here is a function called fetch ledger. Now fetch is a read operation, that's why we are calling it in get query, or you can see the in query script. So fetch ledger, you are passing like the function name. This is my chain code name. This is the arguments what we need to pass there, and this is the arguments for my script for identity. So then I'll go to my query. My pointer will go to the query script. Here it will going to check. So very first we are taking the arguments here in the function name, arguments, and then my arguments is empty for fetch because I don't need any, and then user ID. So here if you go inside, then evaluate transaction will happen. We will pass the function name, and then in stringified manner we'll pass arguments if there is any, and then we are using user ID for getting the credential. We'll first get the credential for whatever operation we are going to do. We are going to check their credential. If the credential, if the identity is exist on the ledger, only that person can perform the certain operation based on their access level. This is the first level of access we are can say the identity verification we are doing, and the second level of our identity verification using their roles inside chain code, right? So that's what we are doing here. Now let's try to perform our second operation, which is register patient. Now we have here details. Doctor 04 is the doctor we have onboarded, right? Now let's try to onboard this stuff. Yes, perfect. Now you can see my this chain code response I got. Patient Anuj registered. Okay, so I was successfully able to register my patient properly. Now let's try to perform login as well. Thing now user ID is simple Anuj. So as of now, it's just a API. You can do many more thing with respect to your front end when you have. You can see user logged in successfully. As of now, I'm just checking does this user ID exist in my wallet. If yes, that's simply logged in. But you can check the password and other stuff as well. So what you need to do for that, you need to extract the details from my credential, and then you have to verify, and then you have to say like is it matching to the my things or not, right? Or you can manage this through the chain code level as well. So it's up to you how you have to do it. Now there is another function we'll try to call, which is add record for patient. So in meantime, let's try to fetch ledger again, see how many details we have added. Now here we should have patient details also because we onboarded patient. Yeah, iteration. Now you can see I have one more stuff which is called patient. Okay, so now there is one more array, authorized doctor. So what we are doing here, authorized doctor is something. First we're going to give access to doctor, like doctor we will authorize the doctor that that particular doctor is going to add the record for the patient, right? So let's try to do this. So that is what grant access API is going to do. What this grant access API is going to do, we are giving access to the my doctor 04 to, we are giving allowing, we are giving consent to this particular doctor to add record or update record for me. That's the thing, we are giving consent. Okay, so now let's try to grant the access. So this is something where from doctor interface he is going to send request to the patient, then patient will going to call this API. So this API is going to call by patient. You can see user ID have given Anuj. So user ID is nothing but the certificate, the identity one who is going to trigger this function. Going to trigger. Please observe the chain code logic closely. So you can see Doctor 04 is authorized, and this response is coming from my chain code itself. Let me show you my chain code logic for this as well. Uh, yeah, grant access. So So here you can see I'm just checking the extracting the attributes. I'm checking here very important function get caller attribute. So this is the attributes where we are extracting the from the credential. We have created the credential, right? Inside that we have mentioned the role and their UUID. From it we are extracting, and it's based on who is calling my this chain code,
right? Then extracting, and we are checking the role. If that role is patient, then only we are performing the function. If that patient role is not patient, then we will not perform that function, because patient is giving consent for their own data, so it should be the patient id only, right? And then we are performing the functions. We are checking the patient record, and then inside that we are pushing the doctor id in that array, and then we are updating my ledger again, or that object, right? So that's what. Now you can see one more change in the ledger. So now So let's try if to we fetch the ledger again. Yes, we can see Dr. Rama 04 is added here properly. So yeah, we are good. We have authorized this doctor. Now what we'll try to do, now let's try to perform our add operation here. Okay, so what we're gonna do, we're going to add another new record called for patient Anuj. And here remember, we are using a user id as Dr. Rama, because now we have authorized Dr. Rama. So Dr. Rama 04 can add the record for patient Anuj. Okay, cold flu okay. And then here you can say m1 m2 xyz okay. Now let's try to hit the record. Now this is going to check, yes, now record got added properly. Now let's grab this id. Okay, and now let's try to fetch the record by record id. Now let's try to fetch the record. So now let's replace here record id we have replaced. Now remember, here we have to use a user id. Now who is going to fetch the record? Anuj is going to fetch his own record. Okay, so now based on that, we are just going to call it, just hit enter. Yeah, now you can see flu cold flu, and then xyz proper, we got this record. And you can see I have recorded here record id we are getting, and then we are getting timestamp as well, like when it's got initiated. So it's like, yeah, perfect. So we are good, we are pretty good on this now. Yeah, so there is one more function called get all record by patient id, so where we are fetching all the records, so we can check the logic here. So inside chain code, yeah, here is inside chain code, there is a logic to fetch all the records. There is one more logic to fetch the history of assets as well, and so on and so forth. So yes, but we are not updating any record as of now, so we can't get the history. So we can write a logic to update the record and fetch the history as well. So the important function is fetch ledger. Now we have not adding any we are giving authority to only those who can fetch the record, is like the hospital, the who has the ownership of hospital. But this can be changed to the data scientist and anyone who want to give the privilege, and based on that you can perform your all business operations logic. So more or less we are pretty good with all the apis. So there is one api I think left, but yeah, you can try it from your side as well. I'll share the code. What was that? Yeah, get all record by patient id, this is the one. So we are looking for a sync iteration. So yep, so this is the one where we can get all the patients by patient, all the records by patient id. So this is the only method we have not demonstrated, but other than that everything is demonstrated and working completely fine. So perfect. So we are good with our video and all the complete playlist. So what next? So next is whatever homework is given, just try to complete the all the coding part. Let's try to implement. You can create a front end, very dashing front end over here to show how the patient operation is working on, how the doctor operation is working, who is onboarding, how onboarding operation is working. All those things you can in proper glorified way you can put it on a table, and then you can publish as your project. Feel free to use my repo, and feel free to use this for your college projects or internship projects or POC project, anything. And if you need any help, please don't hesitate, please reach out to me directly. My social media handles will be there in the description box, so you can reach out. You can join our WhatsApp group, you can join our telegram group, and then we can do a lot more together. So yeah, stay connected and see you in next playlist. Jai Hind.
Bye bye.